And right, have you got thought on this? Like, what is the idea, or what is the purpose of the website? To provide information, right? So most people use website only for that, to provide information, which means they are looking at five, six, seven usual pages about services, products, things like that, right? But a website or your website can be done to do more. When I say do more, uh, I'm talking about various other activities that we do it on third party sites, or you subscribe to SaaS companies, various SaaS services, right? And you pay them for things to be done on website. Only it's their website, not yours, right? So my idea is to tell you and show you how you can achieve those same features, so same things on your own website. For that, I have selected few groupings and examples of activities that are required to be done and are done by your team members, but not on your website. For that, I have basically done these groupings and we'll go through each. So, how many of you, okay, I'm assuming none of you are from HR, right? Anyone doing HR activities or involved in hiring, recruitment? Fair enough. So, well, I'll show you, because these are the things you can tell your HRs that these activities can be done on your website, right? So, most of the websites that I know of or we have built, right, usually don't have a careers page. And if they have a careers page, they don't do the job listing. Usually they use third party sites like Naukri, uh, Internshala, stuff like that to uh, show their job openings. Now, job openings is one part, then whole recruitment management, right? This entire activity can be done on your website, should be done on your website, right? But these are the simplest things that people use third party sites to manage, right? And to achieve these functionalities on your site, you need nothing else but these three plugins or any of these plugins. Now, the plugins that I'm listing, they are just suggestions. They are not recommendations, right? They are not full and final that this is the only thing you should use. They are just the suggestions that you can use to add these functionalities to your website. Feel free to pick and choose whatever works for you the best. So job openings, apply online, these are the three plugins, right? That can easily give you the whole recruitment management on your website, right? And save you tons of money, because recruitment is something that you do continuously. Another use case, handbooks or uh, various documents that you, as an HR, you have to manage for your employees, right? Rule books, policy, things like that. Or cumulative, they're called handbooks, right? These things can be built on your own website. You don't have to go to separate places to have them, right? Or keep them in docs that to be mailed. These are ready references on your website. Your teammates can see it anytime. Now, to build this, it's usually a two-step process. There's no straightforward, because the theme-based thing. We need to create a custom post type, right? And we need to restrict accesses. So we require one of these plugins to restrict access to that content. We don't want, not everyone will be comfortable sharing their leave policies or their employee handbook to public in general, right? There might be confidential information there only for your employees. So those things can be put in, or restricted access to those pages using these plugins. Then training, right? When new employees join company, we want people to be trained to guide their learnings, right? There are a lot of knowledge
that's there on long running projects that you want to pass on to your new employees, right? So those things can also be done on your own website. You don't need to go to third party sites to manage them. How? These e-learning plugins, right? There are too many of them. I have just selected 3 of them. Pick any and just use them. They work with most themes, so there's no challenge per se. And build your own training program for your employees on your own website, right? Now, HR was a very small segment that I covered. The major use case of a website is in sales and marketing, right? How many of you think website is primarily for this purpose? Very few. What do other people think like website is for? What's the purpose of the website? Let's come back again. Apart from the information, despite having their websites, create landing pages on third-party sites, HubSpot, Lead Squad, and there are many more, right? I have never understood why, but I thought, you know, let's give you guys some options or tell you that you can create landing pages on your own website. Right? These plugins or any new blog-based themes are capable of giving you landing pages. Use them to create landing pages on your own website. You spend tons of money to generate traffic and then pass that whole traffic instead of your own website to someone else's site. Right. So use that traffic on to get traction on your own website. Then when it comes to leads, landing pages, generating leads, right? Where do you manage them? In your inbox or to some CRM? That entire lead flow, right? From landing pages all the way to the uh, conversions can be managed on your own website. No need to go to a third party service. Then contacts, right? CRM is basically leads and contacts. Some plugins that can actually help you achieve this on your own website. And all these examples that I'm giving you, they all have free plugins. They all have pro plans, right? But the free itself is good enough for most use cases. Any of these plugins, based on your requirement, can cover all these things. Newsletters. Another thing that marketing people send a lot, but use third party sites, right? You can easily cut down your cost of sending those marketing emails if you use build it on your own site. Some of these plugins, some of these plugins will let you send all these campaign emails easily, track them, even provide you with rich features that these third party site give you at a fraction of the cost. To send newsletters, you can actually use these plugins. Surveys, right? Polls. More than polls, surveys. A lot of marketing people want client surveys, net promote scores, right? Just install any one of these plugin on your website and you're done. You can actually manage the whole thing on your own website. Again, no need to use Google Forms, look bad. You can actually market and control the experience completely if it is on your own website. This one is for those people where there's a big marketing and sales team involved, where marketing assets are being, sales assets are being created by marketing team, right? And then sent across, where over the years, there are multiple versions of the same asset, right? So how do you manage them? How do you track them? Another of the challenges,
Big SaaS companies trying to solve these problems, right? A simple plugin on your WordPress site can solve this for you. Some examples of the plugins that allow you to control access to the files, have always the latest approved official document in one place, right? That your sales team can use to do their sales activities, right? All the assets that they need to use, always available in one place. Appointment bookings, schedules, right? All of you uh, will need at some point these things. A lot of people use Calendly for that. When you can actually have this, instead of embedding Calendly on your site, have the feature on your site. Any of these plugins will give you those features and make it easy for you to have appointment booking, fully branded, right? After sales and marketing, the another major effort businesses have is support, right? Press desk, then desk is what everyone thinks about when they think about support. Or again, some other subdomain based site, user docs and things like that, right? Knowledge base guides can easily be built on your website. This is something that most people have started doing now, at least, but still a lot of people do not even understand that they can have their own knowledge base on their own websites. This is free SEO traffic that if you are not having on your website, you are basically passing on to some other domain or some other third party site, which can be yours if your knowledge base is on your own website. These three plugins, again, quite useful. Try them out, right? Pick which one you like. Question answers. If you're a SaaS company, right, your product will have a lot of questions asked by your customers, both pre-sales, post-sales, support, everything, right? You can host your own Q&A section and use your own community to answer them from your own website. And if you are aware of this recent update from Google, useful content update, right? This segment on your site will be much more useful and give you a better uh, results in SEO than not having this now. If you do not have Q&A or a forum on your site, then Reddit, Quora, sites like this will show up for those results or then your own site, even though you have done everything else. These two plugins can help you with question answer format support. And if you're looking for forum, right, then any of these plugins can do the job. Again, forums or Q&A is a choice you have to make based on what kind of product or service you are running or what kind of community you are managing. Then support, help desk, and support. One of the most, when we talk about support, this is like one of the most important things that everyone thinks of. The support is basically tickets, right? Set up any one of these plugins on your site, and you'll most probably get the basic support functionality on your website, right? And take the pro versions of these, and you get the full-fledged fresh desk like an experience right on your website. These are the traffic, right? And more than traffic, these are uh, interaction on your website, people spending time on your website. All these signals are important when it comes to SEO, right? So not having these things on your own website is going to be detrimental to your SEO efforts. Now, these are like the standard marketing support, HR, right? There are a few more use cases that I'm going to talk about that are can't be clubbed into these groups, but are still things that we do, right? And
use third party sites for them, like events. A lot of companies host events, right? These events they create on social media platforms if they want to do it free, or SaaS platforms if they want to do paid, right? All this traffic, all this effort to promote that event goes into those places. Traffic goes there. The traffic that could have been yours. And once people come to your website, again, there's more you can do with that. Any of these plugins can help you with that. You want to sell tickets, you want to run them through your own events, free of cost, right? Webinars. Use these any of these plugins to get those features on your website. Project management. Something almost everyone uses a third party site, right? When any of these plugins would have easily given you the whole functionality on your own website. Now, this is generally you and your customers, right? Use any of these plugins to get project management functionality, right, on your website and save cost is what I'll say. Then donations, fundraising. Once again, we go to third party sites, specifically for NGOs, when they can have a simple donate functionality on their own website. Any of these plugins will give you those functionalities, right? Install them and raise funds from your own website. Because when you are running fundraising campaigns, once again, you are basically trying to pass on the traffic somewhere else. So, if all this can so easily be done on your website, what are the challenges? Right? So, one of the major challenge that I have seen is the support or maintenance, which is with flexibility comes, responsibility. You get a lot of flexibility with WordPress, but that means you also have to take bunch of different types of responsibilities with those features to maintain them, to make sure they're up to date and not a headache. Of course, another thing is you need better hosting. If these things you start implementing on your shared host sites. And of course, the limitations of, CMS. If you're not on WordPress, chances of having these things are difficult. So now that I'm running out of time, questions. With WordPress, the rule of thumb is keep number of plugins as low as possible, right? Why do you think this rule has been created? No, to avoid not maintenance. In case you are not maintaining your website properly, right? One or the other plugin might have a security issue that can create problems to you. So that's the main reason. All these reasons, that speed, resource. Of course, that's why you have to have a better hosting, right? You want functionality. Those third-party sites that you use, so that's resource you also have to have. So that's what I said. You need a better hosting, but I have never seen an issue because there are too many plugins. WordPress does not slow down just because there are too many plugins. It slows down because one of those plugins is badly coded. You have to choose your plugins right. Those things. Doing yourself may not be a good idea. Anyways, yeah. On some third party company. For the LMS, we are dependent on a third party company. So, what I want to ask you is, do you think clubbing everything into one website, users at the technician level, or we should make a dedicated website for WMS, for CRM, for LMS, or all should be clubbed at one level for the like it's a service based company, so technicians access that website.
either for learning how to do some repair kind of stuff and all that. So we use LMS for that, CRM and WMS. So all should be clubbed at one place or dedicated websites for all of the three. See, I'll tell you what we do, right? Or what I prefer. In my case, it is one place. It's better to have everything on one domain than to segregate out them in subdomain. Both these activities, there are pros and cons, right? Uh, Having everything in one domain means you have to have a better configurations of the server. You have to have a when you try to optimize one functionality, might break something else, right? While having them segregated means your overall effort comes down in terms of managing who has access to what, right? But then you have to spend equally more time to manage more instances of WordPress. You have to maintain more instances of servers, right? So it's a compromise. My preferred way is to have it everything in one domain, and at WPoets we do that. So means when we have a higher volume and viability is good, so we should compile everything at one place. Yes. See, because it's a services company and you are doing it for your own team, most of the users are limited and you know the exact number of people who are using. So it's while it looks like we need more resources, we actually don't. So will we have to pay more to get that all at one place, or See, hosting you should be paying more than whatever you're doing. And yeah, anyways, if you do four subdomains, right? Uh, if you're we'll using the end up same paying more? plan, Yeah. then you are using the same set of resources. You are not actually distributing anything. So that's what I wanted to get from your experience. Thank you. Yeah. Yeah. Anyone else? Cool. Thank you, everyone. Thanks for your time. Thanks. Thank you, Banza Hamid, for sharing such crucial tips and tricks on making the best use of one website and one. So, before we dive into the next exciting session, let's take a moment to acknowledge the support of our platform. That's what makes WordCamp Bhopal possible the way we see it, and we're truly grateful for their commitment to our WordPress community. Let's give a big round of applause. Jetpack, Bluehost, GoDaddy, SiteGround, Weglodge, Viewstable, AccuWeb, and last but not the least, MPN. Coming on next, we have with us Vachan Gudmule, a tech visionary with an experience of over 2 decades in the industry. He's a believer in the power of design and free open source software to empower startups. With a unique background in architecture and a passion for tech, Vachan pioneered industry first concepts for alternate app medium. Today, we'll be sharing insights on unlocking limitless possibilities, the journey of e-commerce. We're so glad to have you with us, Vachan. Let's welcome Vachan with a huge round of applause. Hi everyone. Oh, my bad. Use the local Mac. Uh, is the resolution? Can you? 2 minutes, guys. Hi everyone. So
how's WordCamp Bhopal yet? I understand second session, but how's the breakfast? Good, right? Yeah. My name is Vachan Kurmale. So, as Asta introduced, I have been in the industry from past 21 years. I run a web agency called KDC. Yeah, I run a web agency called KDC. We do a lot of things around the internet. We build websites, we build products, we build payment gateways, we build physical hardware products also, which we keep experimenting with. And the reason that stock is about my experience is because along the journey of these ecosystem that are treated that work as a e-commerce platform. So any of these platforms, like for example, the WooCommerce is the most generic fundraising if you want. Give also is a good platform which so fundraising, you will say, why is it e-commerce? But technically there is a transactional value to it, right? So that also comes into the e-commerce environment. Again, taking from Amit, he said that memberships are some of the elements that you can have. So MemberPress, uh, LMS, again, Learn Dash thing. So even forms are in a way in the WordPress ecosystem can be made into an e-commerce solution. So that was the whole idea, not just limited to one popular plugin, but every plugin can have its own e-commerce journey or an e-commerce nature in its own realm and in its own niche. So that's I just wanted to bring up these ideas that uh, not only popular but many more. And of course, this is not the extensive list; it's a very short list, just bringing it from different niches. That's it. And within each niche, there are many more plugins for that. Coming to the topic that I have mentioned, the journey that I have done. So as I said earlier, also the WooCommerce journey is what my primary journey would be. But in general, these are the somewhat I kind of distributed the whole breakup of what e-commerce, in my understanding, can be categorized into. So the most common one, what everyone imagines when you say e-commerce, is web and online like an online web store, right? But it's beyond that. It can not only be one singular merchant web store, but you can also have something called as a marketplace, right? Marketplace, then SaaS. Anyone heard of this term SaaS? Software as a service. So it's as good as building a platform or a service that you're doing, but I'm selling that service to others. So again, instead of selling a product, you're actually selling a service. So that's what is SaaS. Digital to physical, the word sounds what am I trying to say, but I'll explain you when the slides come. It's nothing but how you can like e-commerce, even if the electronic statement is there, it doesn't really need to be stuck with the electronic medium. It can go beyond, it can go into the physical realm. And that I'll just give you some explanations that we've been doing and I've done in my personal experience also. Sorry, my bad. Yeah, experiential commerce. I'll just go through these conversational commerce. So they're more to than a e-commerce element just than stuck to a e-commerce website. So the as I said, the most common one being a web store. Now coming to the journey, why I product that you sell, it has many elements that can happen. For like we have had the product has over 1,000 variations. So imagine having a size and t-shirt having a color. So these become two variables. Now imagine I'm talking about a project wherein we had to have 1,000 ways simple. Then you have what type of internet that you want. Then you have what plan you want. But even if there are three selections, you have to understand the combination which we had to do was a combination of 1,000 products, 1,000 variations. So a single product can also have 1,000 variations. Also, we've dealt with websites which have 10,000 products. So a digital store, your project is very unique every time. Whichever project you do, even if we say it's a it's like just a web front, every project will be unique. So every website has its own unique factor that what I want to bring to people's notice. So this most of these talk that I'm doing are more to build up curiosity into the e-commerce realm and not just think that e-commerce is just stuck to web like an web store. And that's the whole build. You are not selling anything literally, but you're allowing others to sell on your website or on your client's website. So that's again an opportunity that you have that can be taken to any extent that you can imagine. And there's no limitation on what niche you can pick, you know. And even if something exists, there's always healthy competition that is always that you can work with.
So in case we have a short talk, I've also in the past, as I said, it's my experience. So uh, I've also given a talk specifically how you can set up a marketplace. So this is just a video to the presentation in past WordCamp. This was WordCamp Pune, which I've given a talk. So in case if you're curious, you can always have a look at it or see it on WordPress TV later. SaaS, what I was trying to explain. SaaS is nothing but service, software as a service or a platform as a service. Now, the reason I am talking and taking this forward as a talk also is again the journey of e-commerce that we've built. So in-house also we are building products which are based on this technology wherein there's SaaS. So we are providing a software, but you don't have to use the software or download the software. You just use our website as other software and you just log in and get your e-commerce. So a few examples I can give is basically a logistics company can have set up a SaaS platform or a platform as a service wherein your e-commerce connects to their WordPress based SaaS platform and give them real time logistical pricing, can give them real time delivery timelines, can give them. So that's what e-commerce is, not just limited to, as I again keep saying, not just selling, but also selling or giving information based in to your end user or to your merchant, right? So that's those are kind of an examples that you can do of how SaaS or a PaaS can be built on WordPress using the e-commerce logic and flows. Uh, Again, as I said, there is a past talk which happened in Kerala that I had given, which is how you can use WordPress to build a SaaS platform of your own, even without using no code. Or if you're well versed with a little bit of coding, you can do like no code. And if you're a developer, you can of course build anything out of WordPress because of the open source nature that it has and the extendability that it has. So that's a talk that if you are curious and interested, you can always have a look into it. This is what I was trying to explain in the brief, which I would like to take a little more time from the others because so this is an experiment that we kept doing and it's something that you guys can explore because it's not a very highly tapped potential market. And in case if you guys are business oriented, that's something that you can do. If you're students, you can explore the avenues and the future that is holds. So this is nothing but e-commerce, especially as I said, a little biased, sorry guys, but e-commerce allows you to do something called as webhooks. Okay, so webhooks is nothing but whenever any transaction happens or whenever any sale or order purchase happens, you can pass on the information to some other platform or a product or activity. So the suggestion that we've actually built a tool for one of our customers wherein they had an option of where users can select combinations of products and it would create a 3D file from what they select. And that 3D file, once the payment gets done, automatically goes as an order to the 3D printer, which is connected to the internet, and it starts printing the 3D file itself. So imagine it's like we've reduced so much of manual efforts of getting a coordinating with the client, what is your design, how you want it, what you want, and then making a file out of it and then making a giving it a print command in the 3D printer. So to all that is just completely automated. So it's just placing the order and the end user is doing everything. The only job the client had to do was pick out the printout and pack it and ship it, as simple as that. So there's a lot that e-commerce can do. We just don't get stuck with selling, but you can sell in different ways. You can use the e-commerce platforms to a different technologies. So again, I had given a talk in Nagpur about how we can do that. Unfortunately, the demo site is put down, but the talk is there. You can understand the concepts, why and what can be done. So the demo over here was when we actually had the talk. There was actually, I think so, WordPress TV will have it soon about it. But what it actually does is when an order gets placed, a physical printout comes from a printer in the order as a order. So it could be used for a kit for a kitchen KOT, that is called kitchen order ticket, for small local shops which kind of take orders online if they want to, or it if there's a large like we've done this for our clients who are into garments. So they have custom garments that you can select what you can make a combination of the garments that are there and you can place a customized bespoke order.
So since it's a bespoke order, it has to take in your, it takes your body measurements, ask for the body measurements from the client, and it kind of creates a order sheet of all the body measurements, which dress and which all that. So it's like you don't even need, since they are a large team and not everyone is going to be tech savvy, the tailoring division will not be looking into emails and all that. It just makes it easy that the tailoring production team just gets a slip that this is the order, this is the production sheet, and this is where you have to build of this body measurements. It's as simple as that. So these are the kind of experiments that you can do with e-commerce, not just selling. Again, repetitive, but yeah. Experiential commerce. This is something uh, uh, experiential, which also is experimental for us, because we've been trying to do experiments wherein, with augmented reality, wherein before you purchase a product, you can actually. So we were experimenting with one of our Australian clients who was a jewelry designer. So she has bespoke designs that she makes, very very not a standard design of how a jewelry, like you will not understand it's a jewelry unless it's told it's a jewelry to you. To that level work she does. So it was very critical for her to give this experience to her buyers, wherein before they take the product, they need to see it, how it looks on their hand, how it looks on their ear, or how it looks on, because as I said, it wouldn't look like a jewelry. So unless you give that experiential use to it, it wouldn't make any sense of buying. So that's why it was a very critical element that we had to experiment with AR for this. Unfortunately, we never got a opportunity to do VR yet, but yes, AR experimentations we've done. Uh, I've not given a talk, so there's nothing that I can share further than this. But something again, what we're trying to do is little offbeat from open source. What we're also trying to do is build in the highest used platform, which is WhatsApp, into the e-commerce realm. So we are tech partners with Meta, so that it gives us that advantage to explore. So what we're doing is we're using WooCommerce to actually have a product catalog on your WhatsApp. So what happens is the user actually sees your shop on WhatsApp. So we are moving, even if the core of everything is WordPress, the experience that user is using is not using your website altogether, but your entire website management, order management, everything, WordPress is taking care of it. It's just the end user is seeing everything on WhatsApp. So that's something that we've been exploring, and that's something again you guys can explore as an idea, even especially students, because that's not been tapped. And I guess November or December they're going to announce it officially. So you have a potential wherein you can, if you're students and you want to explore this, go through the documentation, see how can you find new ways that you can build this. It's not just limited to WhatsApp. In the past we've tried doing it with Telegram, we've done it with Line, but WhatsApp has just made it, taken the ante up to an extreme level, because they've changed the entire interface around it. So that's something that again you guys can explore. Why is this coming in a WordCamp meetup conference? Because the backend technology, everything except WhatsApp, everything is on based on WordPress. So you can understand what potential WordPress has, especially in the nature of commerce and e-commerce. So that's what the whole point of my slide was about, that it's just not limited. Yes, that's my talk. These are my point of contact. I am not a very social media person who will kind of reply back to you immediately, but in case if you have any curious queries, I'm always there to kind of answer interesting talks. If someone wants to have a question that they have, email is the best way. But yes, still the other mediums are there. I don't know how quick I might respond, but yes, welcome for emails whenever you want. And yeah, open for questions, because I see there's some time. We have 2 minutes. If anyone has questions, suggestions, I'm open to suggestions. Yes. Do we have mics organized? Okay, whatever. I think so. We are loud enough. Yes. Okay. So the question is, if someone who has a offline and online store and they want to do inventory management, would it summarize well? Okay. So what happens is there are tools that are there available. Like as I said, the garment company that I was working with, the
they use oh no, sorry. One of our clients uses that. So there's something called as POS, point of sales. The only catch in a point of sale solution is that the store has to have an online computer. That's the only thing. So you can have a different inventory for offline, like you can have a different. So it's also that you can have multiple stores also, right? Not necessarily one offline store. You could have 10 offline stores and one website. So technically, you have 11 avenues of selling. So there are tools in the WordPress ecosystem. And as I said, I'm a little biased with WooCommerce because I've experimented a lot with them. WooCommerce has a product by Active Extensions called Point of Sales for WooCommerce. There are many more, but my personal experiences with them, and what they do is they allow you to have a inventory specific to a register. So even in one store, if there are three registers, you can have different inventories, or to an outlet level inventory, or to a complete warehouse level inventory. So inventory management is possible through POS, or as well as there are inventory management tools that are existing in the industry which can take up of all this query that you have. The only catch is the device in the store has to be online. I mean, it has to be connected to the internet so that it has real time data. अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोकलाइज डेटा रखते हो और वो स्टॉक का इंफॉर्मेशन वहीं पे रखते हो एंड वो ऑनलाइन सेल नहीं हो रहा है, यू कैन वर्क ऑफलाइन विद द सेम टूल. देयर इज एन ऑफलाइन मोड इन दैट. But if you want the same product is sold at 11 different counters or 11 different stores, including your website, and the inventory is common, that is when it is compulsory that you have to be online. Point of sales for WooCommerce by activity extensions. That's वो plugin का नाम है. Then there is a plugin by VDevs. They are a extensive force contributor. VDevs करके एक बांग्लादेश company है. They have built VPOS. Then there is a POS. There are 4 POS which we experimented, but again, it's a personal thing that I'm saying. Please don't think that it's a marketing thing. But yeah, AE is the one which has worked the best because of the feature sets that they have. Yes. Can I take more questions? Do I have the time? Yeah. So basically, we are working in AR from last 6-7 years. Nice. So I just want to like if you can highlight something in how you are using AR in web, because it's quite very difficult because it's already too heavy in terms of loading the 3D objects on the basis of pattern recognition. Yes. Yeah. So Yes. So AR is a challenge that we had to go through of so as even Amit rightly said, when you extend your website to that extent, you have to have a lot of other complementing elements that have to support it. So we can't use a standard a web server that is there. Even a VPS is not very comfortable. We have to get into extensive auto scaling clouds, because what happens is, firstly, as you rightly said, the 3D files are going to be very heavy. Because it has that, although there are ways you can optimize the compression of a 3D file. And since we are not working with, at least in our experiment, we were using what do you say, a actual 3D file and not an image converted to a 3D. So there's a difference. Like we didn't map a image. Image mapping was not done. What we did is we used a 3D generated model. So because we had a 3D generated model, it at least reduced our file size. But yes, it's a challenge when you do a mapping image, actual physical image mapping. The file size becomes heavy, which is a challenge. But again, what you can do is always there's something called as CDN, which actually in various zones where your clients, okay, आपके end users जहाँ पे भी आपको लगता है target audience है, where on those CDNs you can preload these image files. The only thing is, by default, WordPress will only send this image files or media files in the video or JS. You'll have to consciously write a script which will send even your 3D files. That's the primary thing that in CDN you'll have to do. it needs a minimum level of RAM on client side. Yes. Yeah. That I'm saying. That's always a challenge which we have no control of, and that's why I said your product has to be optimized. The only thing, सिर्फ आपका वेबसाइट है तो आप आपके वेबसाइट पे जितना ऑप्टिमाइज कर पाओगे उतना हेवी रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ द एंड यूजर विल रिड्यूस. Actually, streaming को हम control नहीं कर सकते, right? Streaming is a different aspect. I have not experienced streaming.
So streaming, unfortunately, I'll not be able to give you an answer how streaming can be done. It's streaming in terms of like if you're recognizing something continuously, it's sending the pictures to the server, and on the server side, it's recognizing No, and sending back. see, okay, I meant I thought we were talking video streaming. No, So no. AR, what is happening is the AR, so we've experimented with WebKits. So your Chrome and this guy's Safari or any of these, they kind of take care of all that. Okay. For us, it was never a challenge because the browser level, all that is addressed. For us, only thing what we need to get is the end, the coordinate file that you get, right? So there's a coordinate file which gives you the length, Exactly. how much is the Yeah. width of that space, how much is what was happening. Yeah. So हमें सिर्फ वो चाहिए, वो data हमें JSON में मिल जाता है. And how do you manage the like? We have to make very low poly designs. I think so. This will get a very extensive talk. We can connect offline. Okay. But yeah, Jason. So low quality again, as I said, it's Low the- poly, low poly. low poly नहीं use करते हम because कैसा हो जाता है, as I said, because it's a experiential thing, we want that high quality of Yeah, the. exactly. So our we have edges which are very crisp. We don't do low poly because हमारा experience ही खराब हो जाएगा अगर हम low poly कर रहे तो. Exactly, that's I'm saying because As I said, we'll take it offline because it will get a lot of it will get an alien for most of the people. okay, just last question. Any website that I can see on WooCommerce with AR? Unfortunately, that website is moving to a different platform. That's why that demo is not there. Otherwise, we could have shown that demo also if for you. Okay, sure. Do I have the time? No, right? I think so. You can connect with me offline because we need to get to the next speaker. Can I have the last? This question, one question. Sorry. Yes. So I'm into banking domain for last so many years. Okay. So I'm trying to build something like for financial literacy kind of thing. So we are trying to use the generative AI, and Okay. then based on the inputs, we can have a chatbot kind of thing. So anything which you can suggest with your experience. So unfortunately, there is nothing that is in working or something I can suggest. We are also doing that experimentation currently. So we have a client who's coming up with a portfolio management tool which we are going to build for them. It's in very nascent stage, so unfortunately I don't have a straight answer for that, but we've been experimenting with a lot of GPT solutions that are there. We've explored Bard, we've explored ChatGPT, but then APIs थोड़े complicated हो जाते हैं. So it's an experimental stage, so I won't be able to give you much answers over there, but probably offline we can connect and have a deeper talk on that. All right. Thank you, everyone. Thank you for listening. Thank you for sharing your knowledge and insights, Vachan. It surely is going to keep our attendees inspired towards the subject. So, before we go ahead, a big shout out to SEO Press, our gold sponsor, for their invaluable support to WordCamp Bhopal. We're grateful for their commitment to support the WordPress community. Next in line, we have Nabeen Jaiswal coming all the way from Nepal to share his insights on the topic from average to outstanding, double your support productivity. Something about Naveen? He is the Chief Product Officer at Coding Solutions, where he leads the charge in developing and maintaining WordPress products. Also, quickly informing about the session on full site editing, custom blog theme creation by Pooja Dirashri is going to start in track 2. So, anybody wanting to attend the same may please go ahead. We cordially welcome you, Naveen. Thank you. Can you please have a big round of applause for him? Yeah. Thank you.
Everyone, I just want you to raise your hands if any one of you are a business owner or have worked in the support department. So I can see few hand raises. I welcome you all to this talk. Before I do that, I want to share one of my learning experience. About a year ago, I received an email from one of our customer. The content of the email was something like this. I purchased your product, reading the glorious review about your support team. But my experience has been completely different. I sent an email to your support team a couple of days ago and I haven't received a response to this date. I am unhappy with this experience. This is something that you might have also come across. In our company, we have a policy to respond to all our customers' email within 24 hours. And when I checked, I found that we haven't responded to these particular customers for more than 3 days. So what I did next, I took a meeting with our support team to figure out what was going on. And based on the interaction that I have and further diving into the support, I figure out some of the issues that we are having. Now, these are the issues that we noticed. So one of the things that I noticed was we were unable to meet the response time that we have committed to our customers. Then there was also lack of prioritizations for the premium customers. The next thing we also noticed was a kind of lack of accountability and monitoring of the important tickets. Since some of the team members were working from home as well as from the office, there was some kind of miscommunications going on or lack of communications between the team members. And of course, there was some operational inefficiency. Then I look for finding out solution. What could have done better to improve these things? Because this is something that is going to occur again and again. I welcome everyone to this talk. The topic of my presentation is from average to outstanding, double your support productivity. In this talk, I'll talk about the things that I have implemented in the company and you can implement in your company as well. So some of the techniques that you can implement to improve the ticket efficiency, some of the stats you should consider to monitor for yourself as well as for your team, and how to set a goal for your team so that they get motivated. Before we dive into that, here are a few things about me. I have been working in coding solutions for more than 5 years as a chief product officer. In my career, I have interacted with more than 15,000 of customers and probably sent more than 50,000 of emails. Some of my achievements include 500 plus 5-star reviews and more than 30 plus video tutorials. In my company, I have led our support team as well as I have mentored some of the support teams in different companies as well. So, what I am going to talk about today is not something that you'll hear again and again. You might be already familiar with some of the concepts like in order to provide a better support, you need to have a very good help desk. You need to have safe replies. You need to have good documentations and video tutorial. You need to do some kind of automation. So these are the things that are very common and you might be probably aware of. I'm going to talk about the techniques that is very rarely talked about, and that is something you can implement right away from today. So the first thing we did. So the first thing we did was set the priorities for our ticket. There is a popular saying, if you want to get the things done, get it prioritized. And that is what we did. We started setting the priorities for our customers ticket. What kind of customers should we respond first? And these are the few areas that we consider. Based on urgency, how soon we should respond to our customers ticket. Then what types of customers tickets should we prioritize? Whether should we prioritize pre-sales positions, premium customers, free customers, different requests, or
subscription cancellations. Then we also prioritize what kind of customers should be responded first. Should we respond premium customer first, pre-sales question, pre-sales customer first, or a free user first? Then we offer support through chat and email. So what medium of communication should we prioritize? Then we also set the priorities based on different types of queries we get for our support team. After doing that, it made clear for our team to have a clear understanding what kind of customers tickets should be responded. After setting the priorities, what we did next was create different folders within our support uh, help desk. Sorry, the screenshot is not showing here, but what we did was based on the priorities that we have defined in the Help Scout, that one of the platform that we're using. Again, I'm not affiliated with this one. We created different folders based on the priorities. And when we created the different folders and the tickets were assigned to that folder, our team members can easily see how many tickets are there in each folder and how they should answer. This allows them to have a very good understanding. The next thing after setting the folder we did next was create different types of tags for our tickets. Again, the screen is missing. Is this something that can be fixed? This screen. Sorry for the inconvenience. This I'll continue. So we started defining different kinds of tags for our customers. The tags include like free customers, premium customers, pre-sales questions, VIP support, different requests, feature requests, and many more. What this allow us to do is our team, when they assign the tags, they know that what kind of customers are they need to answer. And when we assign the tag, we have created automation. So whenever a tag is assigned, they gets added to the folder that we had created earlier. And this allow our team, when they start responding, they can see how many tickets are there for each priorities. And when they see visually the tags, they will get an idea how they should approach this particular question. After setting the priorities and the ticket tags, the next thing we did was we started not responding directly, but instead our team members started assigning the tickets to themselves and their colleague, because there are some colleagues who handle specific types of tickets by themselves. After this step, our colleague were our team members were able to know that how many tickets needs to be answered on a particular day by themselves. So they don't get overwhelmed and they know for sure these are the tickets I need to handle. After all these steps, they start answering the ticket based on the priorities that we had set. And when they answer the ticket, they start from the topmost folder that is created in the priority. So, yes, sorry. Mhm. So I'll share an example of how we handle the pre-sales question. So whenever our team members receive an email and they start the work, the first thing they do is assign different tags to the tickets they receive. And then based on the tags they are adding, they are added to the different folders. Now, during the process, they know immediately how many precious questions are there. After finishing adding the tags, they move to the precious folder and they start answering the tickets right from the topmost folder. They answer one ticket and then they move to the next. They answer the next and move and keep on going. Now, what happens is when they answer the pre-sale question, some customers respond and some customers don't respond. If a customer responds, that is fine, whether they take an action or not. But in some cases, if the customer doesn't respond, after 2 days, we send them a follow-up email because that ticket is still there in the pre-sales folder because
Our goal is to convert the pre-sales customers to our paid customers. So after 2 days, we send them an email, something like this. Hey, I sent you an email about 2 days ago answering the support queries that you have. Did you receive it or not? If you have further questions, please let me know. In our experience, what we have noticed is some of the customers, after they receive the response, don't take an action. But when you send them a follow-up email, they are reminded about the product they are interested in, and they are more likely to make the purchase. And believe me, I cannot share the stats, but we have very good conversion following these steps. Okay, the images are finally loading. Now, one of the benefit after implementing this technique we noticed was we were able to solve all the problems that we mentioned. And here are some of the results. Like we were able to convert more pre-sales customers into paid customers. We rarely missed any of the customers' ticket. All our ticket customers were responded on time. Then we also improved the accountability because the tickets were being assigned to our colleague immediately when they start the work. Then we also notice a better internal communications among the team members. And combine these results, we were able to get more reviews in terms of text reviews as well as video testimonials. Now, now you want to track how your team member is performing because it basically means how long your customers have to wait to receive their first response. And the sooner you can respond to your customers, they will have a better experience. The next is the handle time, which basically means how long does it take for your team members to write an email. Next is the happiness score. Most of the help desks allow you to get a feedback in the email response that you have sent. And this, by analyzing the happiness score, you will also get an idea how good your team members are performing. Along with that, if there is any other stats that you want to track, feel free to add to this performance matrix. Now, I want you to introduce to the power of one. This is something that my mentor had taught me for the business, and I think this is something that you can apply for anything in your life. Let's suppose you want to implement some of the techniques that I shared today, and you become ambitious and you want to track all those stats as well. But what kind of goals should you set? Should you set like let's make an improvement by 10% or let's make an improvement by 50% by the end of year? It sounds inspiring, but sometimes if you don't receive that result, you your team or you by yourself will feel demotivated. So what I say is start with something very small, something that is ambitious as well as have a better return. So start by making a progress of just 1%. Isn't this something very achievable? Just 1%. And I want to show you the power of this 1%. So here are some of the things that you can track for your team members. One is the number of ticket handled. You should aim for handling more tickets. The next is try to reduce the first response time and try to reduce the average handle time. In the current scenario, let's take one of your team members handle 500 tickets, which is approximately 25 tickets for 20 days. And their average response time is 180 minutes. And average handle time is 300 seconds, which basically means 5 minutes. Now, by just making 1% improvement target in the first month, that same person will be able to handle 505 tickets. He or she will be able to reduce their response time by 2 minutes and their average handle time by 3 seconds. 3 seconds per ticket. Just combine 505 into 3 seconds. That's a massive number. That same person by the end of a year will be able to handle 563 tickets
160 minute is their first response time, and their average handle time is reduced to 266 seconds, 4 minute 26 seconds, a massive improvement. It still doesn't sound convincing. If that person continues just by making 1% improvement per month, in second year, he or she will be able to handle 634 tickets. Their first response time will be reduced to 142 minutes, and their average handle time per ticket will be less than 4 minutes, which is around 3 minutes 56 seconds. By the end of third year, that same person will be able to handle 714 tickets per month. Their average response time will be around 2 hours, and their average handle time will be 3 minutes 30 seconds. Just imagine you are able to respond to your customers in less than 4 minutes. And the same person who started answering just 500 tickets, by the end of the third year, he or she will be able to handle 214 more tickets per month, not just a month, year, but per month, which is a massive improvement. And feel free to make the adjustment. Set a goal and adjust this goal as per your requirement. What kind of motivational goal you want to track and monitor. Finally, I want to share some of the tools that we use. So we use Help Scout. I find it very easy, very intuitive, affordable, and very clean interface. Another good alternative open source is Free Scout. Then we use Slack. We have done Slack integrations, which allow us to immediately get a notification when a customer sends an email so that we can respond to that customers in a couple of minutes. We use Loom and Komodo Dex for screen recording. Sometimes it's very difficult to explain an issue by writing a lengthy email response. So what we do, we record the screen, show them what they can do better and solve their issue. And in our experience, what we have found is the customer appreciate this little effort and they are more likely to give more reviews for our products. Then for maintaining our handbook, guides, and other stuff, we use Google Docs. And last but not the least, we use Grammarly for making the grammatical mistakes. Since you are a professional company, your emails should be free from any kind of grammatical mistakes, and Grammarly helps you do that. With that being said, that's a wrap. Thank you for being here. If you'd like to connect with me or if you have any questions, here's my LinkedIn ID. Now that opens the floor for the questions. If you have any questions, please raise your hand. Hi. We also give the support to WordPress, and it we don't know how should be the response time because uh, once you are getting any ticket, it can be very lengthy because the technical issue that their website have. So in that scenario, because if that is a SaaS-based product, the questions are limited, right? What is the price? This feature is included or not? Then you can limit the response time. But in technical part, how can you limit and how can you measure the your team performance? Okay, so I'll just paraphrase the questions that you have. So let's suppose a customer reaches out to you with a bug that cannot be immediately addressed. So how do we answer that? Is that the question that you're asking? My question is not that. The first response time you can measure, the Yeah. average first response time you can measure, but the handle time, because it may be because you are not directly taking care of that ticket. Okay. Okay. So it may take 3 days, it may take 40 days. It may be like simply our teammate can say it is the client fault because he was not responding. That's why. So basically, the handle time means the moment you start writing the email to the moment you send the press button. It's not the time you discuss about the ticket. So that is how it's considered. But in your case, what you can do is there are some tools, or if you are a developer, you can handle the ticket. Like you can do some kind of coding. Like in Help Scout, there is an API. You can do some kind of development. Like the moment you get the ticket to the moment the ticket is being closed. So that is something. If you want to track how long a ticket is taking to be handled or closed, then you can handle the response time that you are looking for. But Help Scout or any other tool, what they basically do is
They record the time from the moment you start typing to the moment you say hit the send button. Any other questions? If not, we'll end the session. If you have any questions, please feel free to ask me. I'll be in the auditorium. With that being said, see you all. Thank you, Naveen, for your insights on support productivity. Also, I regret a bit of inconvenience caused, and thank you for your patience. So now I think it's time for a well-deserved break. Following the break, we will proceed with the felicitation of our sponsor. So kindly rejoin us at 12:15 p.m. Thank you and enjoy your break. Thank you.
Yes, good afternoon. So, my name is Shivya. I have been a psychotherapist and I have had the pleasure of helping 1,000 plus individuals dealing with problems like stress, anxiety, mood disorders, self image issues, as well as career related issues. So, today I'll be speaking on digital distress. Digital distress would be something that it's a relevant topic today, and this is the reason why I chose it is because distress can be seen in many ways. Basically, disconnect, fatigue, exhaustion, irritability, anger, and feeling like you don't belong sometimes. So, especially navigating in the tech world today, the working population, people who are having their own uh, companies, even yes, self-employed as well as people who are working in a 9 to 5 job. So today I'll be talking about specific issues related to mental health. First, can I have a raise of hands, depending on the question that I'm going to ask? Have you ever experienced that the tasks which seemed routine or easy for you often sometimes seem really difficult and tedious? Can I have a show of hands, please? Yes. So this often happens, and it's not just us alone, but it's many people, and we have experienced this sometime or the other in our lives. So yes, thank you so much. Yes. So digital, just like error logs, digital distress also is an indicator into when our mind is in a mental, in a uncomfortable or a sorry, in a discomfort state. So distress is something that would present itself again as in many ways, particularly as exhaustion, fatigue, disconnect. Taking the previous question into mind, the phase where we often feel that we feel that it's often sorry there are times when we are feeling very tired of the routine task, we are reaching burnout. What happens in burnout? The always on culture, having the need to always have the phone on us and in front of us at all times. So, taking one specific situations into mind. Have you any time in your life have you experienced the need to always have the phone on you when you're in the washroom and while crossing the street? While having a one-on-one interaction, checking your if you haven't seen your phone, checking your phone, seeing whether it's on you, and freaking out when it isn't. So the always on culture brings a lot of panic, and it creates a lot of distraction in us, causing confusion. And it's a state where you often feel that you are reaching burnout, or it happens usually in burnout also. It adds to it. Physical exhaustion would show itself like your bodily movement slowing down, typically your reflexes. And emotional exhaustion would be forgetfulness, underreacting or overreacting to a stimulus, which does not seem like you. And it's a phase. Often we confuse burnout with a state or an end result or a consequence, but that's not so. It's a state. Sometimes we go in and out. We reach burnout, we come out of burnout, and also sometimes burnout presents itself in many um it for a long time, maybe months. But that's when these are some of the ways in which we can notice when burnout is um, evident for us. For especially the people working in the tech, the tech working population, innovation and constant need for newness and new ways to approach a problem, solve an issue is very evident. So when we are reaching the phase of burnout, or we are in the burnout stage,
we are not able to think new things. We are not able to have new ideas or solve a issue with a new approach or have a understanding. Just as uptime, the system needs time to reboot, our mind also needs downtime. That is planned vacations, taking breaks, weekend getaway. Speaking of breaks, how do we prevent burnout? Taking regular breaks would often mean not only for lunch breaks or when you feel like your body is getting exhausted, but especially when we are feeling that we are in the phase of burnout, we often should take more breaks. That means if we are moving for 2 to 3 times a day, we are getting up, we should do it instead of three, we should do 4 or 5. Do it deliberately, take some time off and move, not just physical exercise, but time away from the screen and also time away from having just a constant sitting position. Burnout is often felt when we are not properly delegating work. One, we are not having realistic expectations of our deadline. We are not able to understand when we can provide and when we can't. So, setting realistic goals, talking to your clients, talking to your teammates, talking to your superiors, talking to your teammates about what's practical, what's logical, and what's best. Seeking support is often last but not the least. So, seeking mental health support would often come with a cost. I understand. It's an investment on your part, and I understand. So, investment can be seen as an hesitation, investment of time, investment of money, investment of understanding, putting your head into understanding a new part as to what therapy is, and also, of course, mental health stigma. So, just to tell you a gist that mental health basically is sometimes now, as therapy has evolved, we have 30-minute sessions, we have 60-minute sessions, we have 45-minute sessions, online sessions, offline sessions, and also there are different people, different mental health experts dealing with different kinds of problems. So similarly, if you go to a heart surgeon because of a heart problem, similarly you do the same. We can often we can be said as I as the IT team support helps with your IT assets, we help the mind. Similarly, another issue that I have often seen in the working population is imposter syndrome. When you feel that your success is not yours, you feel that it's not um, it's not you alone, or you could not have made it. How does it look? Often attributing your success to luck and saying that maybe it was a one time shot and I got it. Maybe yes, maybe no. So this situation that I'm presenting itself, I'd like another hand raise as to who experienced this ever in your life. Attributing success to luck, often feeling that you cannot, you would not, you will not, maybe you cannot be able to achieve it. Often means having a negative connotation with any of your competencies. Feeling less competent. Can I have a raise of hands, please? Ever in your life? Often saying that maybe second guessing yourself and saying that you might not be up to the project or taking on a new challenge and feeling that you are not competent enough. Anybody here has experienced this any time in their lives? Okay. What are the other sources of imposter syndrome? Often there's a difference between hard work and smart work. So sometimes hard work would be putting your efforts, but it would be a very thin line where we often cross, where we start to overcompensate for our insecurities and say that maybe I should do a little bit more. So that's exactly when you should take a step back and see imposter syndrome creeping in. You know you're competent enough, you know you have put in the work, but you just do not know whether it's enough. So sometimes overworking and crossing that boundary often presents itself as having imposter syndrome, which can lead to fatigue, exhaustion, and a lot of stress.
often saying no to new things, telling yourself that maybe not, maybe I'm not up for it because I have not taken this challenge before, or I will not be able to do it because I've never had this, never had this exposure. Saying that maybe saying that maybe or maybe your own accomplishments were not your own, saying that maybe always whenever you feel that you have done something, saying that, if the credit goes to the entire team, or the credit goes to your client, or the credit goes to your supervisor, never taking your own credit. That also is how imposter syndrome presents itself. Often in an Indian population, we feel that's humbleness. But please understand that there's a very thin line between understanding whether it's you being humble, or you just plain being very, very worried that it's not actually your own work. How do we counter imposter syndrome? Yes. People who have already gone through the same similar project, people who have taken up that project or had that expertise, seek their guidance. Talk to them, have a SWOT analysis of your own. Be aware of your own strengths and weaknesses, and also have a peer review, have a critical analysis, so that you can understand whether there is a practical and there is a emotional side to it. Understand when you have practical, when you are lacking in your competencies, and when you are just plain worried. Suppose, I'll give an example. Suppose that you say that we have communication issues. We are worried about our English. We are worried about standing up in a big crowd and just plain speaking. So, when in a meeting, you were able to say it, your idea has been accepted and appreciated, give yourself a pat on the back. Tell yourself that it was a work well done. This might seem small, this might seem cliche, but it's not. And it adds up and goes a long way. Yes. So I would like you to imagine something right now. Okay. So imagine an orange apple playing football. Okay. I'll repeat once again. An orange apple playing football. Took 2 seconds. You thought about it, but you were able to imagine it. Yes? No? Yes? Okay. So what happens here is, in imposter syndrome, our mind always sometimes confuses us that you cannot see the end result in a positive light. Or you cannot possibly see yourself winning, see yourself becoming a success, or getting the credit due. So here visualization talks about you actually visualizing what happens after. That means, coming back to the example, our mind never thought that we would ever have to imagine an orange apple playing football, but we did, and we were able to imagine so. So, just in this case, our mind tells us that you cannot imagine yourself winning. I suggest, and another way to counter imposter syndrome is, do the same, do the opposite. See yourself winning, even though your work is not done. Imagine yourself how you would feel after the work is done, after a successful project launch of a product, after successful completion of a project. See yourself getting the credit, see yourself getting a lot of appreciation. And that's another way you can handle imposter syndrome. This is a quote that I live by. Taking responsibility is accepting that you are the cause and the solution of the problem. And that says that you and you alone can be the fixer and upper of your own problems. Yes, that brings me to the end of my presentation. Thank you. Any questions? Any questions? Yes. Yes.
Hi, ma'am. This is Shashank Chaturvedi, and I'm currently a BTech pursuing student. Listening to all this speech and the golden words which is spoken to us, and have been hitting into my mind since the start. Right? I have a very straightforward, a simple, and a complete question for everyone sitting out there. There are business professionals, there are people out there who are much more and way more experienced than I am, because I'm just a budding student right now. So I would say, how can we deal with the practice of overthinking and overthinking leading to procrastination actually? Because, being a teenager or being growing into adulthood, we have so much expectation to ourselves and to the people we have with us. Ki bhai, 10 days mein I want to do this, or I am planning this event, but last moment pe something happens and that this gets cancelled, right? And there have been instances into life कि हम लोग expect करना छोड़ देते हैं कि यार नहीं हो रहा तो छोड़ो, leave this aside, and that which it leads to procrastination कि भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, and that person never comes. So I just want to ask that if somebody says that overthinking is quite good कि भाई आप हर expect से एक situation के बारे में सोच लेते हो, but to my mind I would say overthinking actually sucks, and it actually binds up your mind towards unnecessarily depressions and anxiety towards yourself, and it definitely creates self-doubt. So I would kind to have your golden words to acknowledge my mind throughout that. Thank you so much. So your problem is procrastination, right? So procrastination often happens when the so as I have understood, it's the version of the inner child battling perfection. So when you say it's an for people who are having a constant conflict between perfection, often procrastinate. So when you say I will do it or I won't, it's an all or none principle for you. So procrastination often happens when the inner child is saying, I will do it or I will not. I will sit, I will actually get all the credit due, or I will sleep at home. So when you understand your conflict between your inner child, understanding whether you are achieving perfection and how you see perfection, you will be able to understand why you procrastinate. Any other question? Yeah. Yeah. Okay. So you are working remote and you don't have a work-life balance yes. So I'll say it's a very small thing. So there is a amazing thing I read in a book that you often delegate spaces for where you work, what you do. So if you are working on your bed, do not do that, so that you see that there is a space where when you cross that line, you are no longer doing that particular act. That means delegating in a small room only when you feel that if in a small room you are not studying, and that would show because you might or might not have a proper functional sitting desk. So if you do not, that means that's why the work is not done. The proper allocation, the geography of you actually doing the work helps a lot. Yeah. So if your work balance is a bit it's a little problematic, I suggest you delegate your geography. Actually, you do not eat on the bed, do not work on the bed, and do not sleep on the desk. Yeah. Okay. Any other question? Yes. हेलो। सो बेसिकली अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस को देखें, जैसे आपने कहा है कि हम ये करते हैं कि भाई किसी ये शायद मेरे से लत से ये मैं सक्सेस मिल गई मेरे को। एग्जांपल के लिए जैसे हमने एआर शुरू किया था, सो माय पार्टनर हैज एक्सप्लोर्ड द एआर एंड वी हैड क्रिएटेड द प्रोडक्ट, वी गॉट रेस फंडिंग फ्रॉम ब्राजील। नाउ इसमें एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि समहाउ किसी इवेंट में हम इन्वेस्टर से मिलते हैं और उसको हमारा आइडिया पसंद हो जाता है, नहीं इन्वेस्ट 1 CR instantly, or you can say in some time. But if we see this is a luck, अगर हम उस इवेंट में नहीं जाते, उससे नहीं मिलते, तो हमारा आइडिया आई थिंक इतनी ऊपर नहीं जाता। तो उस पॉइंट को लेके आपका क्या सोचना है कि लाइक हम अगर हम इस उसको रेप्लिकेट करना हो, जैसे somebody people come and कि आपने इसको कैसे किया एंड हाउ वी कैन रेप्लिकेट दिस, ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से। बट उसमें यही होता है कि उसे भी नहीं पता होता कि उसने कैसे किया, समहाउ हो गया।
तो उस चीज को कैसे रोका जाए? You want an understanding कि कैसा हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वी थिंक, जैसे आपने कहा ना कि ये मैं लकी था कि मैं सक्सेसफुल हो पाया, वो फीलिंग की अच्छा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को टेक्नोलॉजी पता थी, मेरा ब्रेन वैसा था कि मेरे को समझ में आती चीजें, ये गॉड गिफ्टेड चीज होती है मेरे ख्याल से, इसको मैथ समझ में आती है, मैथ समझ में नहीं आती है। तो मैं भी किसी को कुछ इसलिए मतलब मेरे पास वो ब्रेन है कि टेक्नोलॉजी में समझ पाया, मैंने बना दी, वो चीज़ हिट कर गई एंड मेरे को सक्सेस मिल गई। Okay. सो इन सिंपल वर्ड आई आई थिंक माई सेल्फ, जो आपने एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बोला कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी सक्सेस एक लक है। Yeah. अगर मेरा ब्रेन उतना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाला नहीं होता तो मेरे कोड समझ में नहीं आते, और मोस्टली लोगों को कोड समझ में नहीं आती, दैट्स व्हाई दे गो ऑन डिफरेंट स्ट्रीमलाइन। ऐसा नहीं है कि वो लोग खराब होते हैं। सो उस लक को आप कैसे डिफाइन करते हैं? Okay, that means basically you're asking कि जब you are attributing your successes to luck, always, how do you handle that? नॉट ऑलवेज, हाँ, No. हाउ आई हैंडल them. Okay. So basically, it's about how you talk to yourself. Imagine that you have had a project for about a year, and you say that अच्छा सक्सेस तो हुआ क्योंकि मैंने तो सब कुछ बहुत लकीली किया. So that would mean that you say to yourself that मैं पूरा एक साल lucky था, and you still take it away that it was all attributed to luck. So it depends on how you talk to yourself. That means that you say whether my hard work paid no heed, or you say that I was just I did the work and I got the result. So it might be that you have to understand ki the practical maybe you are undermining all your competency and putting everything to coincidences. या दैट एग्जैक्टली द Yeah. पॉइंट। कोइंसिडेंस इज समथिंग जो कि Yeah. मैंने काफी बड़े लोगों की मेंटरशिप ली है, जैसे कि uh, ये कोइंसिडेंट होती है सक्सेस, मतलब आपका एफर्ट है, आपकी नॉलेज है, आपको कितना समझ में आता है, आपका ब्रेन कितना अच्छा काम करता है, बट सक्सेस इज कोइंसिडेंस। लाइक एक कंपनी से मिला था मैं, ओनर थे वो, उन्होंने अभी 500 करोड़ में कंपनी बेची है। उनसे मैंने पूछा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, बिकॉज जिस स्केल पे हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं, जिस नॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो उनका भी सिंपल आंसर था कि सक्सेस एक लक है। मैंने अपने आप को उसमें डाला, और मेरे को नॉलेज थी, मैं उन लोगों से मिलता गया जिन्होंने मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया, और मेरे को और अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। Okay. So here I'd like to correct you. Success, for me, success is not luck. Success is grit. You shamelessly doing the same thing 10 times. That is success. I would not be here. I would be, yes, I am not as shameless, but I would like to be. So you saying that what success may be, that's what exactly I'm saying. Narrating to yourself how you are attributing success to would be important. If success is grit for you, you would do the same thing 10 times. But if success is luck for you, you would just do it once only. If you have any questions further on, I can talk to you one on one. Yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an enlightening session. And I hope all our audience is now motivated and is ready to upskill themselves as well. All right. So before proceeding further, I just have a request that before posting your pictures online on your social media handles, it is a request that you use our official hashtag, that is hashtag WC Bhopal, and tag us on Instagram or LinkedIn or Twitter, any social media handle, to get featured. Thank you so much. So are you all ready for the next session? I don't see the energy. Are you ready or not? All right. So, ladies and gentlemen, it's a pleasure to introduce Imran Khan, a dedicated tech support specialist at WPMU Dev. Imran is more than just a support expert. He brings 5 years of WordPress experience and an outstanding 7-year background in cybersecurity to the table. Today, Imran is here to enlighten us with his session on WordPress security and cleanup. Get ready to bolster your WordPress knowledge with this cybersecurity authority.
Let's give a big round of applause to Imran Khan. Connector. या हेलो गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम इमरान है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए, अच्छे हो गए। आज हमारा जो सेशन है वो वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड क्लीनअप पे है। तो लाइनअप में हमारे पास 4 पॉइंट्स है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे आपकी वेबसाइट्स हैक हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हम पहले वो सिचुएशंस पे बात करेंगे। इन केस वैसी सिचुएशन होना नहीं चाहिए तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो सेफ्टी मेजर्स पे बात करेंगे। देन आपकी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है या इन्फेक्टेड हो जाती है तो हम उसे कैसे क्लीन अप करेंगे एंड कैसे फर्स्ट कैसे डिटेक्ट करेंगे क्या वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज या इन्फेक्टेड है या नहीं। देन क्लीन अप करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी टिप्स बताऊंगा जो आपके वेबसाइट पे सिक्योरिटी लेयर्स ऐड करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। या यहाँ पे 6 ऐसे केसेस है जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। पहला जो है केसेस, यहाँ पे मैं आगे के स्लाइड्स में सारे इमेज वाइज है जो आप रिलेट कर सकते हो अच्छे से। फर्स्ट हमारा केस है साइट इन्फेक्टेड विथ मैलिशियस कोड। आपकी वेबसाइट का जो WP कोर है, प्लगइन्स है, उसमें मैलिशियस कोड रह सकता है जिससे आपकी वेबसाइट इन्फेक्टेड हो सकती है। ये जो इन्फेक्शन है ये एक जेनेरिक है, कोई भी सिनेरियो में आ सकता है। चाहे आपका जो सर्वर है वो उतना सिक्योर नहीं है तो भी वेबसाइट इन्फेक्टेड हो सकती है, या आप आउटडेटेड प्लगइन्स, थीम्स, WP कोर यूज कर रहे हो तो भी इन्फेक्टेड हो सकती है, या आपके वेबसाइट पे कुछ कॉन्टेक्ट फॉर्म है जहां से शेल अपलोड होगी या PHP मैलिशियस फाइल अपलोड होगी, वहां से भी साइट इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड जो हमारा केस है वो है डीडोस अटैक, डेनियल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें एक अटैकर बहुत सारे बॉट्स के थ्रू आपके वेबसाइट पे अटैक करता है जिससे आपकी वेबसाइट की बैंडविड्थ फिनिश होती है एंड आपकी वेबसाइट रिपीटली डाउन होती है। सो आपको उसे एनालाइज करना रहेगा, आपको चेक करना रहेगा। आपकी इन केस एग्जांपल आपकी वेबसाइट बार बार डाउन हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा जो मैं आगे के स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है साइट रिडायरेक्ट टू अनदर साइट। जो हमारी वेबसाइट है, ऐसा आपने कहीं पे देखा होगा या किसी क्लाइंट से आपने सुना होगा या आपके फ्रेंड्स में आपने देखा होगा, क्या आपकी जो वेबसाइट्स है वो किसी थर्ड वेबसाइट पे, कोई भी जर्मनी या जापान या चाइनीज वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होती है, कोई फार्मेसी साइट पे रिडायरेक्ट होती है, जहां पे आपके यूजर्स, आपके वेबसाइट का ट्रैफिक रिडायरेक्ट होता है। आपके वेबसाइट्स के यूजर एंड ट्रैफिक को नहीं पता रहता है कि आपकी वेबसाइट इन्फेक्टेड हो गई है और वो सारे लोग उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते रहते हैं जिससे हमें हमारा बिजनेस में काफी सारा हार्म होता है। तो हमारा जो केस है एग्जाम्पल, क्या हमारे वेबसाइट में हम आउटडेटेड प्लगइन्स यूज करते हैं, थीम यूज करते हैं, वर्डप्रेस कोर यूज करते हैं, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है जहां पे हमारी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है कि आप जो पासवर्ड्स यूज कर रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, या आप वीक पासवर्ड यूज कर रहे हो वो फिलहाल आपको पता नहीं होगा। सो आगे मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है या नहीं। अगर आप वीक पासवर्ड यूज कर रहे हो जहां से अगर अटैकर को पता चल जाता है क्या आपका जो पासवर्ड है वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू या ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू गैस कर सकते हैं और जिससे हम साइट में एंटर कर सकते हैं, तो ये एक केस है पॉसिबल जहां पे आपकी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। 6 हमारा जो एग्जाम्पल है, पॉइंट है,
वो है अनमेंटेन्ड एंड अनटेस्टेड प्लगइन्स हम यूज करते हैं जो काफी सालों से अपडेट नहीं किया जाता है। आप अगर वो प्लगइन डाउनलोड करोगे तो वर्डप्रेस के प्लगइन्स पेज पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये प्लगइन्स काफी साल से अपडेट नहीं हुआ है, मेंटेन नहीं हुआ है। तो मैं प्रीफर नहीं करूंगा वो प्लगइन को यूज करने के लिए। तो उसके जगह पे आप उसका अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे क्या इन केस अगर ऐसी सिचुएशन होने से हम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और वो सेफ्टी प्रिकॉशंस पे हम अभी डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आप आपके वेबसाइट्स कॉम्प्रोमाइज होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है क्या वर्डप्रेस कोर को हमेशा अप टू डेट रखें। आप ये जो इंफॉर्मेशन है आप आपकी वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद WP माइनस एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद आप अपडेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके थीम्स कितने अपडेट्स बाकी है, प्लगइन्स पेंडिंग है क्या नहीं कोई अपडेट्स के लिए, एंड वर्डप्रेस कोर अपडेट्स के लिए पेंडिंग है या नहीं। यहाँ से आप अपडेट्स कर सकते हो। यहाँ से प्रीमियम थीम्स जो है वो अगर API कनेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, अदरवाइज आपको मैन्युअली अपडेट करना रहेगा। सेकेंड, आप ऑटो अपडेट इनेबल रख सकते हो। ऑटो अपडेट इनेबल करने के लिए आपको प्लगइन सेक्शन में जाना रहेगा, सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करना रहेगा, देन बल्क एक्शन पे क्लिक करके इनेबल ऑटो अपडेट्स कर सकते हैं। ये जो है ये प्रिकॉशन मेथड है। तो इन फ्यूचर अगर कोई प्लगइन लेटेस्ट अपडेट रिलीज होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके साइट पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपके पास अगर बहुत सारी वेबसाइट्स है 5, 10, 50, 100 और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एक एक वेबसाइट में जाके लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद चेक करो किसका अपडेट बाकी है, देन अपडेट करो। सो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप साइट मैनेजमेंट टूल यूज कर सकते हो। ये जो है ये मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। आप जाके ट्राई कर सकते हो, आपको चीजें अच्छी लगी है तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे मैं दो टूल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो है मैनेज WP, जहाँ पे आप एक साथ में ही बहुत सारी आपकी साइट्स मैनेज कर सकते हो, उसमें ऑटो अपडेट कर सकते हो। सेकेंड टूल है WPMU देव हब, तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट हमारा है क्या हम जो पासवर्ड यूज करते हो, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, मोबाइल नंबर हो, या फिर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन हो, तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। तो पासवर्ड मैनेजर आप यूज करो। पासवर्ड मैनेजर में आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस है, लास्ट पास, नॉर्टन का पासवर्ड, देन गूगल पासवर्ड मैनेजर एंड वन पासवर्ड। यहाँ से आपका जो पासवर्ड जनरेट होगा वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा एंड सेफ रहेगा। या फिफ्थ पॉइंट काफी कम लोगों को पता होगा, जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन करते हो आपके एडमिन डैशबोर्ड में तो वहां पे एक टूल्स नाम का मेनू रहेगा। टूल्स के ही अंदर आपको एक साइट हेल्प का मेनू रहेगा। साइट हेल्प में ऐसा रहता है क्या वर्डप्रेस का में अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी क्रिटिकल इशू है, माइनर मेजर इशू है, तो साइट हेल्प एक वर्डप्रेस का डिफॉल्ट फीचर है जहां पे आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप ये जो चीज है ये आप रेगुलरली चेक करो। आपके साइट में अगर कुछ इश्यूज है तो वर्डप्रेस आपको सामने से इन्फॉर्म करेगा और जिसे आप फिक्स कर सकते हो। और ये जो है ये हमेशा गुड स्टेट में ही रहना चाहिए। नाउ बात करते हैं आज के टॉपिक्स में जो है थर्ड पॉइंट में हमारा है मालवेयर डिटेक्शन एंड क्लीनअप में। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी वेबसाइट इन्फेक्टेड है या नहीं। यहाँ पे जो टेकीज है वो कुछ है प्रोफेशनल्स है, बट आप जो है कुछ बिगिनर्स भी हो गए तो उनको कैसे पता चलेगा, वो कैसे चेक करेंगे कि उनकी वेबसाइट इन्फेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो आपकी वेबसाइट को। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ऑनलाइन स्कैनर्स है। ऑनलाइन स्कैनर जो है एक टूल है जो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको वेबसाइट स्कैन करने के लिए लॉगिन एक्सेस की जरूरत नहीं है, आप किसी की भी वेबसाइट स्कैन कर सकते हो। सेकंड है प्लगइन मेथड, एंड सेकंड प्लगइन मेथड में आपको वर्डप्रेस एडमिन एक्सेस की रिक्वायरमेंट रहेगी।
थर्ड जो है वो वर्डप्रेस CLI है। वर्डप्रेस CLI जो है उसमें आपको सर्वर में SSH एक्सेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो वर्डप्रेस कमांड लाइन इंटरफेस से आप स्कैन कर सकते हो। तीनों चीज का मैं आपको डेमो दूंगा, आई मीन PPT के थ्रू। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स है, जैसे 5 मैंने वेबसाइट पॉइंट किया हूं, ये यहाँ पे जाके आप आपकी वेबसाइट स्कैन कर सकते हो, और वेबसाइट में इन्फेक्शन रहा तो ये वेबसाइट आपको इन्फॉर्म कर देगी। ये आप नोट करना, ये वेबसाइट सिर्फ इन्फेक्शन है या नहीं वो बताएगी, कौन से प्लगइन के फाइल में या कौन से WP कोर में इन्फेक्शन है वो ये वेबसाइट इन्फॉर्म आपको नहीं कर सकती है डायरेक्टली। तो ये फ्री टूल है, एक सजेशन है, रिकमेंडेशन नहीं है, आप ट्राई करो, आपके केसेस में ये आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ मैं सिक्योरिटी प्लगइन्स के बारे में बात करूंगा। जैसे आप आपके वेबसाइट में प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के लिए, पेज बिल्डर के लिए, तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी प्लगइन्स है जो आप आपके साइट में इंस्टॉल कर सकते हो, एंड आपकी साइट्स को मालवेयर स्कैनिंग कर सकते हो, जिससे आपकी वेबसाइट में अगर कोई फाइल इन्फेक्टेड है तो ये प्लगइन आपको इन्फॉर्म करेगा, और जिससे आप वो आगे फर्दर क्लीन अप कर सकते हो। यहाँ पे जो प्लगइन्स है वो प्लगइन्स सारे बेस्ट है, तो मेरा सजेशन जो है कि आप एक एक प्लगइन ट्राई करो या उनके फीचर्स चेक करो, जो आपको अच्छे लगे वो यूज करना। देन अभी जो थर्ड हमारा पॉइंट है कि साइट वर्डप्रेस कोर प्लगइन्स थीम कैसे चेक करते हैं। CLI का ये मेथड है, ये कमांड आप सेव कर सकते हो, और इन फ्यूचर में आपको आपकी वेबसाइट स्कैन करना है विथ CLI तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो। ये कमांड में अगर लिख के आता है वेरीफाइज, जब आप कमांड यूज करोगे WP कोर चेकसम, तो अगर वो क्या करता है, ये कमांड बेसिकली वर्डप्रेस रेपो पे जाता है, वर्डप्रेस कोर की फाइल को कंपेयर करता है आपके इंस्टॉलेशन के साथ, आपके जो वर्डप्रेस साइट में जो वर्डप्रेस वर्जन है उसकी कोर फाइल को, और वर्डप्रेस रेपोजिटरी पे जो कोर फाइल है उसके साथ कंपेयर करता है। इन फ्यूचर इन केस फाइल में अगर कुछ चेंजेस रहते हैं तो वो आपको बताता है चेक सम फाइल डजन वेरीफाइड, और ये स्पेशली आपको ये भी बताएगा कि कौन सी फाइल वेरीफाई नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर फाइल। यहाँ पे आप नोट करना, ये जो CLI कमांड्स है ये आपको नहीं बताएंगे क्या प्रीमियम प्लगइन्स को वेरीफाई ये नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ उन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं जो वर्डप्रेस के रेपो में है, जैसे फ्री प्लगइन्स हो गए हैं एंड फ्री थीम्स हो गए हैं एंड वर्डप्रेस कोर। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन स्कैनर हो गया है, प्लगइन्स हो गया है एंड CLI हो गया है, यहाँ से रिजल्ट आने के बाद आपको आपके साइट्स का सबसे पहले बैकअप लेना रहेगा। बैकअप इसलिए क्योंकि हम मालवेयर क्लीनअप, अभी जो क्लीनअप प्रोसेस करेंगे, तो इन केस अगर हमारी वेबसाइट की कोई फाइल डिलीट हो जाती है या हमारा इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाती है तो हम पुराने बैकअप में से वो रिस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप लेने के बाद आपको एक चीज एडिशनली करना रहेगा, फाइंडिंग द पॉसिबल कॉज ऑफ इशू। यहाँ पे आपको वेबसाइट में कुछ फाइल्स रहेगी, कुछ इन्फेक्टेड फाइल्स रहेगी जो आपको CLI बताएगा या फिर प्लगइन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आएगी, वो फाइल को आपको मैन्युअली इंस्पेक्ट करना रहेगा, वो फाइल में कोड कहाँ से आ रहा है या वो कोड क्या कर रहा है। अगर आपका उतना कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है और आप टैक्स सेविंग नहीं है, तो आप वो क्या कर सकते हो, फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, virustotal.com पे जाके स्कैन कर सकते हो, तो virustotal.com आपको बता देगा वो फाइल में इन्फेक्शन है या नहीं। अगर आपको वो फाइल में इन्फेक्शन मिलता है, वो फाइल को आप रिमूव करोगे। ये रिमूव करने का स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे चल के जब सारी चीजें वापस से इंस्टॉल करोगे तब इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज वो इन्फेक्शन आपके नए फाइल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। रीइंस्टॉलिंग एवरीथिंग अफ्रेश, आपका जो भी आपको इन्फेक्शन मिलता है वर्डप्रेस कोर में, प्लगइन्स में, थीम्स में, प्रीमियम प्लगइन्स एंड थीम्स, आपको वो सारी चीजें रीइंस्टॉल करना रहेगा। आप रीइंस्टॉल होस्टिंग पैनल के थ्रू एंड CLI के थ्रू कर सकते हो,
CLI के कमांड्स जो है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके इस केस में क्लीनअप में बहुत हेल्पफुल होगा। आप ये सारी चीज का क्लिक कर सकते हो, इन फ्यूचर आपके लिए हेल्पफुल होगा। या नाउ अभी एडिशनल सिक्योरिटी टिप्स पे हम बात करते हैं, तो मैं पर्सनली मेरे साइट के लिए प्रेफर करता हूँ क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर अगर आपने किसी ने नाम नहीं सुना होगा, तो क्लाउड फ्लेयर एक डीएनएस मैनेजर है और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस भी ऑफर करता है। तो इसका सबसे अच्छा फ्यूचर मुझे क्या लगा है, कि जब अगर कोई भी अटैकर हमारे साइट पे अटैक करता है, तो वो पहले क्लाउड फ्लेयर पे जाता है अटैक। ओके, क्लाउड फ्लेयर पे जाएगा, क्लाउड फ्लेयर वो अटैक को हमारे सर्वर पे आने देगा नहीं, हमारे साइट पे आने नहीं देगा, वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर में आपको डीएनएस लेवल पे फायरवॉल मिलता है और बहुत सारे एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं। तो आप क्लाउड फ्लेयर जाके चेक कर सकते हो और इस फ्यूचर को आप यूज कर सकते हो आपकी वेबसाइट में। सेकंड पॉइंट जो है वो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप आपके वेबसाइट्स के लिए सिक्योरिटी प्लगइन्स यूज करो। स्टार्टिंग में मैंने जो 6 प्लगइन्स दिखाया था, वो या उससे अच्छे आपको वर्डप्रेस के लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, तो वहां से आप यूज कर सकते हो, जिससे आपके वेबसाइट पे एडिशनल सिक्योरिटी लेयर आ जाएगी। और जैसे आप क्या कर सकते हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड, आप के लैपटॉप में बायोमेट्रिक स्कैन होगा, मोबाइल में बायोमेट्रिक स्कैन होगा, तो आप बायोमेट्रिक स्कैनर से आपकी वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हो। थर्ड जो है ईमेल ओटीपी, जब भी ईमेल पे ओटीपी जाएगा तो आप ईमेल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ईमेल से आप लॉग इन कर सकते हो। एंड फोर्थ जो है, क्या प्लगइन में फायरवॉल भी रहता है। अगर आपका जो सर्वर है वो उतना सिक्योर नहीं है, या आपके सर्वर लेवल पे कोई फायरवॉल नहीं है, तो आप प्लगइन यूज कर सकते हो। देन इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, वो आप आपका ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड चेक कर सकते हो जो मेंशन वेबसाइट है उस दर। अगर आपका पासवर्ड और ईमेल एड्रेस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो आप यहाँ से चेक करके चेंज कर सकते हो। नाउ इसका आप फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों भी आपको क्यूआर कोड के हेल्प से गाइड दिया हो। फर्स्ट जो है WP-CLI गाइड है, जहाँ पे आप मालवेयर्स डिटेक्ट कर सकते हो एंड क्लीन अप कर सकते हो। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो होस्टिंग पैनल से, अगर आपको WP-CLI जो है आप उतने फेमिलियर नहीं हो, तो आप होस्टिंग पैनल से भी क्लीन अप कर सकते हो। सो आई होप सबने इसका क्लिक कर लिया होगा। इन फ्यूचर मतलब अभी नहीं, कुछ महीने बाद या कुछ टाइम बाद आपको इसकी रिक्वायरमेंट रही, तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हमारा सेशन फिनिश होता है। आपको कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर बाद में भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? या सॉरी। सो जो अभी आपने चीजें बताई वो सब सिंगल साइट के पॉइंट। यस। What happens in the case of multi-site? Let's suppose a malware is affecting a file. How do you find that particular uh, place where the malware has infected in a multi-site और उसको remove किस तरह किया जाए ताकि बाकी साइट्स अफेक्ट ना हो अगर एक साइट के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है तो? ओके, मल्टी साइट में जो आप कोर देखोगे, प्लगइन्स देखोगे, वो सारे सेम डायरेक्टरी में इंस्टॉल होंगे। सो आप कोर रिप्लेस करोगे, प्लगइन्स रिप्लेस करोगे, तो वहां पे आपका है ना 80-90% क्लीन अप हो जाएगा। देन रिमेनिंग जो है, अगर डेटाबेस में इन्फेक्शन रहा, तो डेटाबेस में आपको सर्च करना रहेगा मैन्युअली, टेबल्स में लुकअप करना रहेगा, VAL सर्च करना रहेगा। तो जहां पे अगर डेटाबेस में कुछ मैलिशियस कोड है, तो वहां पे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड जो क्यूआर कोड है, उसमें है ना एक हम डेटाबेस में जो क्रॉन्स है वो भी रिसेट करने के लिए बताए हैं। तो अगर आपकी साइट इन्फेक्ट होती है, तो हम डेटाबेस में से भी कुछ कुछ चीजें क्लीन अप करते हैं जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। एनी मोर क्वेश्चंस? यस सर। स्मार्ट मालवेयर देखा, उसमें मेरे साइट में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम कोई मतलब ओपन कर रहा है साइट तो रिडायरेक्ट हो जा रहा है किसी के लैंडिंग पेज पे।
सेकेंड टाइम उसी को खोल रहा है तो फिर ओरिजिनल काम कर रहा है। तो ये किस तरह का है, और मैं काफी खोजने के बाद कई प्लगइन में कुछ नहीं मिला। फिर उसको जब डाउनलोड किया आपके पीस से फाइल जिला से अपने कंप्यूटर पे, तो मेरे फाइल मैनेजर में वो वायरस करके मेरे कंप्यूटर ने किसी ने डिटेक्ट किया। तो ये किस तरह से मतलब हुआ होगा तो? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर, आपके जब स्मार्ट वायरस आप मेंशन कर रहे हो, जो रिडायरेक्शन वायरस है, तो आपने आपकी वेबसाइट जो मैंने सिक्योरिटी प्लगइन्स के नाम मेंशन किया था, उससे कभी आपने स्कैन किए है क्या सर? बाद में वर्डफेंस से मैंने किया, तब जाके वो डिटेक्ट हुआ था। ओके, तो ऐसी जब वायरस इन्फेक्टेड होता है तो हमें सिक्योरिटी प्लगइन्स से स्कैन करना चाहिए, तब हमें पता चलता है कि हमारे वर्डप्रेस के फाइल मैनेजर में कहाँ पे वो फाइल इन्फेक्टेड है, वहां से आप रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो है, ये है ना, htxs index डॉट php wp block header डॉट php, इस तरीके के फाइल में इन्फेक्शन रहता है। तो जब हम मैन्युअली वो हर एक फाइल को इंस्पेक्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा। एक बार डिलीट करो फिर दोबारा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। नहीं, उसमें है ना, वो डेटाबेस में क्रॉन्स जॉब सेट है, इसलिए सर वो कुछ टाइम के बाद डेटाबेस में जो क्रॉन्स जॉब सेट है, जिससे वो ट्रिगर वापस से होता है टास्क, इसलिए वो वापस से आ रहा है। आप एक बार डेटाबेस फिर से चेक करेंगे, तब आपको उसका अच्छे तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सो अभी मेरा सेशन का टाइम हो गया है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, एथिकल इमरान नाम है, इमरान खान बहुत कॉमन है इसलिए। तो इन फ्यूचर आपको कुछ डाउट्स है तो आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए।
Round of applause for them. Thank you so much. Then next, I would like to invite the representative of UCards. I don't think anyone's there from UCards. Also, next we have WooCommerce. I also don't think that WooCommerce is there as well. So can we have a big round of applause for both sponsors? Also, like a heartfelt gratitude to all the silver sponsors who are there with us today and also who are not there. So a big round of applause for them. Next, in line, we have our bronze sponsors. So I would like to call upon the stage the team representative of W Ports Technology. Can we have a big round of applause for W Ports? I don't see the energy. Like, can we have a big round of applause, guys? Thank you so much. Next, we have Phoenix Solutions. I request the team representative of Phoenix Solutions to be on the stage. Thank you so much. A big round of applause for Phoenix Solutions. May I please now call upon the stage the representative of WP Vibes. Can we have a big round of applause for WP Vibes? Thank you so much. I now request the representative of Brandcon Digital Group to be on the stage. Thank you so much. A very big round of applause for Brandcon Digital Group. So we'll wait for Brandcon Digital. Moving forward, we have FlexiCloud as our main sponsor. Do we have someone from FlexiCloud? I don't think we have, but can we have a big round of applause for FlexiCloud? Also, next we have N99 panel as our main sponsor again. So do we have someone from N99 panel? I don't think we have. So a big round of applause for them as well. Sir, may I please? Yeah. So I'd like to invite again the representatives from Grandpond Digital Group to the stage. A big round of applause for Grandpond Digital Group. Again, a heartfelt gratitude to all our grown sponsors. Can we have a big round of applause for all our grown sponsors? Thank you so much, everyone. Thank you so much, Yashwardhan Anand. Thank you so much, Priya Sharma, ma'am. Thank you.
we'll be starting with the next session in a couple of minutes. Till then, I request everybody who is not here but can hear me to kindly join us in track one for the session on AI by Yash Verma. I repeat, we'll be starting with the session on AI by Yash Verma in a couple of minutes.
So, welcome back, all of you. I hope you had a good time having your lunch and networking. Refresh हो गए होंगे अभी तक. So, I cordially welcome our next speaker, Yash Verma. Yash, something about him. He embarked his digital journey in the year 2017, exploring digital marketing, web development, and content creation. Presently, you can say he's the force behind Growth Rocket. Uh, he will be shedding light on AI and content creation. We are very happy and glad to have you with us today, Yash. Can you please have a round of applause? Thank you. माइक चेक माइक चेक. लंच के बाद एनर्जी डाउन है. सबकी डाउन है. कोई बात नहीं, एआई का काम ही यही है, अपन लोगों की एनर्जी थोड़ा और बढ़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट. गाइस, कैन यू प्रेजेंट द पीपीटी प्लीज? सो गाइस, थोड़ी एनर्जी दिखाओ यार. कैसे हो? चलो, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास. सो गाइस, यहाँ पे एआई का थोड़ा थोड़ा आइडिया तो सबको होगा जब से मतलब चैट जीपीटी आ गया है. चलो, गैस ये फोटो कैसे बनी होगी? कैसे बनी होगी ये फोटो? मिर्जर्नी जिंदाबाद. तो मैंने जब मुझे ये आइडिया प्रपोज किया गया, यश ने मुझे आइडिया प्रपोज किया था कि एआई पे बात करेंगे भाई, तो मैंने सोच लिया था कि यार अब पीपीटी भी पूरी अपन एआई से बनाएंगे, आइडिया भी पूरा एआई पे होगा, पूरा एआई एआई होगा. एनी केसेस ये मतलब पीपीटी जो पूरी है अभी आप देखोगे कितने घंटे में बनाई होगी. 5 मिनट में बनी थी. आधे घंटे का परफेक्शन मारा है, तो थोड़ा एफर्ट मेरे मार्क्स. ठीक है, चलो. बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा मैं अपने बारे में शू शा बता दूं. जीवन में हमने क्या उखाड़ा है, तो ऐसा कुछ खास नहीं उखाड़ा है, बट टेक्निकली वी हेल्प कंटेंट क्रिएटर्स. आप जितने भी क्रिएटर्स को देखते हो, इवन आज तो एक पैनलिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, धैर्य गंगवानी, मैं उनके साथ काम करता हूँ, और ऐसे मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर्स है जिनकी मैं हेल्प करता हूँ फॉर देयर एंड टू एंड कंटेंट क्रिएशन. एंड कंटेंट ही क्यों? बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट आई रियली लाइक. मतलब कंटेंट हम लोग कंज्यूम करते हैं, सब लोग करते हो नहीं करते हो? इंस्टाग्राम, अपडेट बस भोपाल का पेज है अपना, व्हाट्सएप भोपाल का पेज है, सब तो सोशल मीडिया पेजेस है, सब कंटेंट के अराउंड वर्क कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट रियली एक्साइट्स मी, और मुझे काफी मजा आता है कंटेंट के अराउंड में वर्क करने में. एंड दैट्स वेयर माय जर्नी कम इनटू द पिक्चर. मैं इन लोगों की हेल्प करता हूँ फॉर देयर कंटेंट क्रिएशन. सो ये तो है. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब ये सेशन एक्चुअली किसके लिए है? इनमें से जो भी लोग हैं, आप इनमें से किसी ना किसी क्राइटेरिया में जरूर लैंड करते होंगे, क्योंकि वर्डप्रेस का इवेंट है, तो ज्यादातर लोग ब्लॉगर्स होंगे, स्टार्टअप ओनर्स हमारे पास हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं. उसके अलावा डिजिटल मार्केटर्स बहुत सारे हैं. कितने सारे डिजिटल मार्केटर्स है? टेल मी. बहुत सारा क्राउड है यार हमारे पास डिजिटल मार्केट. कंटेंट क्रिएटर्स है कोई यहाँ पे? कौन कौन कंटेंट क्रिएट? अच्छा, किसका किसका मन करता है कंटेंट बनाने का? सब बनाने लोगों, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत स्कोप बाकी है. ठीक है, मैं डेली क्रिएटर्स के साथ वर्क करता हूँ, बहुत स्कोप है. और लास्टली ये मैंने ना बड़ा जुगाड़ करके लिखा था. मैंने कहा जो कोई कहीं लैंड नहीं करता, क्यूरियस माइंड तो है यार, इवेंट में आए तो ऑब्वियसली एक क्यूरियस माइंड तो है ही. सो अगर आप इसमें लैंड करते हो तो आपको ये पीपीटी, ये प्रेजेंटेशन, ये थीम काफी मजेदार लगेगी. ठीक है, अच्छा, ठीक है. अब थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा. ठीक है, मैं थोड़ा ऐसी बात करते करते करता हूँ, ऐसे वन साइडेड मजा नहीं आता, आके बोल के चले गए. ठीक है, सो टेल मी, इसमें से कौन कौन से टूल है, मतलब आप लोगों को पता होंगे, बताओ कौन सा टूल है? चिन्मय, यू टेल मी. चैट जीपीटी, बार्ड. चलो थर्ड वाला कौन सा है? मिड जर्नी. चलो यार, अच्छा है, मतलब सबको पता ही है कि कौन सा है. तो आई थिंक मोस्टली आप लोगों ने गेस कर लिया है, राइट?
बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एआई और टूल में बहुत डिफरेंस होता है, और मैं उसको ना अभी थोड़ा सा एड्रेस करता हूँ। ठीक है, ठीक है। सो ये लाइन समझ में आ रही है? नो मैटर व्हाट टूल्स कम्स एंड गो, बेसिक प्रिंसिपल रिमेन्स अनचेंज्ड। सो एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मार्केटर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज कि बेसिक प्रिंसिपल्स जिसे पता है ना, जिसको मछली पकड़नी आती है, तो वो उसे अंटार्कटिका भेज दो, उसे नदी में भेज दो, नाले में भेज दो, वो हर जगह से मछली पकड़ ही लेता है। सो एआई में भी ना ये एक बहुत बड़ा कैच है। मैं देख रहा हूँ आज के टाइम पे लोग टूल सिखा रहे हैं, चैट जीपीटी के कोर्सेज बन गए हैं, और मतलब मिड जर्नी सिखा रहे हैं। बट मैंने एक चीज नोटिस करी जो मैं यहाँ कवर करना चाहता हूँ, लोग एक्चुअली टूल्स को कवर करने के चक्कर में बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो मिस कर जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग उस चीज को टच करेंगे जो कि आई थिंक हम सबको पता होनी चाहिए। एंड व्हाट इज दैट? कि हमें टूल्स नहीं सीखने हैं, और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, टूल्स हमें नहीं सीखने हैं, हमें टेक्नोलॉजी सीखनी है। क्योंकि एआई जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब मैंने इतनी तेज ग्रोथ कंप्यूटर्स की देखी थी, देखी भी नहीं थी, मतलब मैंने सुनी थी मेरे फादर्स और एंसेस्टर्स से कि जब कंप्यूटर आया था तो ऐसे ही हड़कंप मच गया था, राइट? तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि क्या सीखना है। आप टूल सीख लोगे, आप प्रीमियर प्रो चलाना सीख सकते हो, आप फिल्मोरा चलाना सीख सकते हो, फोटोशॉप सीख सकते हो, बट अगर आपको बेसिक डिजाइन सेंस नहीं है ना, तो आप अच्छे डिजाइनर नहीं बन पाओगे। सेम वेज आज के डेट पे हम लोग वहीं स्टैंड करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली एआई की टेक्नोलॉजी क्या है, एआई किस तरीके से वर्क करता है, या एआई को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब सुनने में बड़ी बोरिंग बात है, लेकिन ये टर्म जैसे आप लोग देख रहे हो स्लाइड में, चैट जीपीटी और बार्ड को नहीं सीखना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखना है। अच्छा, यहाँ पे किस किस को पता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? थोड़ा बहुत आइडिया है मतलब, बट मैंने इसके लिए खुद की एक डेफिनेशन बनाई है, काफी मजेदार सी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली एक चीज है, एक जादू की छड़ी है जिससे आप कोई भी जादू कर सकते हो। स्पेसिफिकली आप जादू जादू करवा सकते हो। तो टेक्निकली ये डेफिनेशन अच्छी लगे तो रख लेना, बट मैं तो इसी तरीके से समझता हूँ कि यार अगर जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई, वो कोई भी एआई टूल को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। और एक नॉर्मल तरीके से जब हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट को, तो वो नॉर्मल रिजल्ट देता है, कई बार अनशर्ट देता है, राइट? जैसे मैं अगर पूछ लूं क्या मेरी बंदी बन सकती है, तो कहेगा जरूर, क्यों नहीं बन सकती है, ऐसे ऐसे करोगे तो बन जाएगी, राइट? बट अगर मैंने उसको अपने बारे में बताया कि देखो यार मेरी इतनी हाइट है, मेरे ये इंटरेस्ट है, मैं किस टाइप की लड़की पटा सकता हूँ, तो एआई जरूर बता देगा, राइट? ठीक है, अब ये बंदी वाला जोक ना, जैसे पता है उसे पता है जो मुझे जानता है। रिसेंटली ना मेरा कंटेंट ना, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई, और उस पे एक बड़ा फनी सा जोक था जो मैंने ऐसे डाल दिया था कि एआई आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, बस आपको लड़की बंटवा के नहीं दे सकता। मानते हो कि नहीं? बड़ा रियल जोक है, बट यार पता नहीं लोग ऑफेंड हो गए थोड़ा, पता नहीं माँ बाप पे ठीक है, तो थोड़ा आगे आते हैं। प्रॉम्प्ट इज बेसिकली अ बॉडी। एक अच्छा प्रॉम्प्ट में कुछ चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी टूल से, जनरेटिव एआई से काम करवाना चाहते हो, तो आपको एक रोल डिजाइन करना बहुत जरूरी है, मतलब असाइन करो उसे एक रोल। अब वो रोल किस टाइप का हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप उसको स्क्रिप्ट राइटर बना दो, कंटेंट मार्केटर बना दो, डिजाइनर बना दो, फैशन डिजाइनर बना दो। तो एक रोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर कंटेंट मार्केटर्स हैं, अपना सर्कल वैसा है, वन कंटेंट के अराउंड वर्क करते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली कंटेंट मार्केटर का एक एग्जांपल लेके आया हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा रिजल्ट भी दिखेगा किस टाइप से। ठीक है, असाइनिंग अ रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद टास्क डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मतलब हम उससे क्या करवाना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए हमें उससे क्या चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मतलब जैसे हमने एक कंटेंट मार्केटर का एक्ट दिया है उसको, और मैंने उसको कहा कि मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए आप मुझे मेंटर कर दो, राइट? थोड़ा और इसको और डिफाइन करते हैं। तो मैंने उसको ये सिनेरियो में बता दिया कि आज की डेट पे मेरे 500 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और मेरा टारगेट है कि मैं 10,000 फॉलोअर्स 30 डेज में हिट कर दूं, राइट? और मैंने उसे ये भी बताया, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप प्लान देना भाई, याद ऐसे बातों वाले में काम नहीं चलेगा। ठीक है, एंड गोल देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है गोल, की आप मुझे एक स्टोरी दे दो, आप मुझे एक प्लान दे दो, एक टेबुलर फॉर्मेट में दे दो, एक मतलब एक रूटीन दे दो, एक हैबिट सर्कल बता दो, या फिर एक लाइफस्टाइल बता दो। ऐसे मल्टीपल आप डिफाइन कर सकते हो गोल, और आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी है कि एक्चुअली मेरा
एक्सपेक्टेशंस क्या है इन 30 डेज में। और जब हम इन चीजों को थोड़ा सा मिक्स करते हैं तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके का बनता है कि आई वांट यू टू एक्ट एज अ कंटेंट मार्केटर स्पेशलाइजिंग इन कंटेंट अराउंड, मेरा जो नीश है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, मैं इसके अराउंड बनाता हूं जैसे। और आई वांट अ मेंटरशिप, ठीक है, मेरे जितने फॉलोअर्स है और मुझे इतने हिट करने हैं। अब आप मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओ, मुझे उस पर टारगेट ऑडियंस क्या है वो बता दो, ठीक है। एंड कंटेंट जो है वो थोड़ा सा फन होना चाहिए, स्ट्रैटेजी बताओ, ठीक है। और मैंने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक किया है, लिंक्डइन पे करना है आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम चूज किया है और मैंने उसको क्लियरली बता दिया है कि 30 डेज कैलेंडर बनाना है और अपलोडिंग स्केड्यूल भी दे दो। सो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट कैसे आया है। एक नॉर्मल आंसर में और एक डिटेल्ड आंसर में क्या डिफरेंस है। पीपीटी किसी को चाहिए तो बताते हैं ठीक है। तो जब हम ये देख रहे हैं तो ये एक एक चीज इसने काफी डिटेल में बताई है, किस टाइप के टॉपिक होने चाहिए, मुझे क्या क्या करना है, वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है। तो एआई से बात करना भी एक तरीके का आर्ट है, राइट। चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि एक प्रॉम्प्ट समझना बहुत जरूरी है किस तरीके से होता है। तो थोड़ा और एग्जाम्पल के लिए मैं एक दो प्रॉम्प्ट और लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर कंटेंट मार्केटर्स है तो उसी से रिलेटेड, जैसे आप लोग ब्लॉग पोस्ट बनाते हो, कितने लोग ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं? चलो सारे कंटेंट मार्केट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ, ठीक है, फूड ब्लॉगर हूँ एंड मैं फूड के अराउंड बनाता हूँ। वो भी नीश मेरा स्पेसिफिक है, माइक्रो नीश सबको पता है ना। हम माइक्रो नीश में अपना धंधा बहुत अच्छा चलता है। सो यहाँ पे मैंने उनको स्पेसिफाई कर दिया कि मैं हेल्थ और सस्टेनेबल कुकिंग पे बनाता हूँ, ठीक है। मुझे एक वीडियो बनानी है, वीडियो स्क्रिप्ट बनानी है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मतलब कई बार यहाँ पे जिन लोगों के ब्लॉग्स होंगे वो स्पॉन्सर पोस्ट भी लेते होंगे, तो मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक किया है कि किचन गैजेट को स्पॉन्सर भी करना है मुझे अपने स्क्रिप्ट में भी और अपने आर्टिकल में भी, ठीक है। और मैंने थोड़ा और बता दिया है कि इस पूरे आर्टिकल में ये काफी एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट इंटीग्रेट हो, आ, मेरे जो पूरा थीम है उसमें सेव टाइम, पेस पे, प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। मतलब मैंने उसको एकदम बताया डिटेल में कि मुझे क्या चाहिए, राइट। और जब मैंने उसको इस तरीके से बताया तो ये एक नॉर्मल स्क्रिप्ट की, गिव मी अ स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक इन दिस वर्ड्स, इसके कंपैरिजन में इस टाइप के रिजल्ट्स काफी अलग तरीके का रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। अच्छे से दिखाओ यार थोड़ा सा, ठीक है। आप देखोगे ना काफी डिटेल्ड तरीके से देता है ये। हाँ यार सीरियसली मैंने भी नहीं पढ़ी थी, अच्छी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम कंटेंट कैलेंडर से रिलेटेड और मल्टीपल चीजों से रिलेटेड हम बना सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक एआई से समझना जरूरी है, दैट इज कि लोग अभी बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि एआई रिप्लेस कर देगा, एआई हम लोगों की जॉब खा जाएगा। कितने लोगों को सही में लगता है कि जॉब खा जाएगा? लगता है खा जाएगा? खाया ना, खाएगा नहीं खाएगा? खाएगा, ऑफकोर्स खाएगा, पर बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट भी कर देगा। जैसे कंप्यूटर्स ने जॉब ली नहीं थी पर नई जॉब्स क्रिएट करी थी। तो अब क्या लगता है, मतलब अगर कंप्यूटर से ही कंपेयर करें तो नया फ्यूचर बनने वाला है या फिर बहुत सारी ऐसी जॉब्स आएंगी जो हमें पता नहीं है? तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में तो अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है धीरे धीरे, मतलब स्पीड में हो रहा है, इंडिया में उतनी स्पीड में नहीं हो रहा है। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय एआई, बट यू आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय दैट पर्सन जो एआई यूज करना जानता है, ठीक है। सो सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, हमें यूज करना है उनको, राइट। सो ये बात मत भूलना, यू आर गोना बी रिप्लेस्ड बाय अ ह्यूमन हु नोज हाउ टू यूज एआई। अब ये एक बहुत मजेदार स्लाइड है, बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब मुझे याद है जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था, चैट जीपीटी सबसे पहले आया था, मैं शायद अर्ली यूजर्स में था उस टाइम। एंड मतलब वो इतना प्यारा टूल है, मतलब मैं तो बड़ा एडिक्टिव हो गया उसका, ठीक है। हर चीज में मतलब मेरा असिस्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉयज को हमने हटा भी दिया है, सॉरी। हाँ, तो ये टूल्स है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ फॉर माई एंटायर एंड टू एंड कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी, फॉर मी, फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई क्रिएटर्स। सो अब एआई कैसे मेरी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा मजेदार तरीके से बताता हूँ। तो चैट जीपीटी मेरा एक असिस्टेंट है,
जो मेरी हेल्प करता है, ठीक है, इस तरीके से मदद करता है कि कुछ भी पूछो कुछ भी बता देता है, कुछ भी एनालाइज कर देता है। ही इज अ गुड फ्रेंड, मैं कंसल्ट कर सकता हूँ उससे, ठीक है। मिड जर्नी ने मेरे ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस कर दिया है, क्या आइडियाज निकालता है। इवन ये पीपीटी के मोस्ट पार्ट ना मैंने उसी से बनाया है, ठीक है। वैसे पीपीटी कैसी लगी यार, थोड़ा मतलब डिजाइन विजाइन ठीक था ना, उसी से आइडिया लिया था मैंने कहा देखो यार कुछ टाइम कम है थोड़ा, ठीक है। गूगल बार्ड सबको पता होगा, ये मैं सिर्फ गूगल ट्रांसलेट करने के लिए यूज करता हूँ, मुझे पर्सनली इतना ज्यादा पसंद नहीं है, बट रियली मतलब मैंने अपनी लाइफ में जहां जहां मैं पे करता था सबटाइटल करने के लिए, कैप्शंस करने के लिए, अब मैं बार्ड को यूज करता हूँ। परप्लेक्सिटी यूज करता हूँ क्योंकि कई बार चैट जीपीटी का सर्वर डाउन हो जाता है, मतलब हम लोग पूरे दिन ही यूज करते थे, हमारा सर्वर ही डाउन हो जाता है, लिमिटेड एक्सेस। अच्छा, पाई डॉट आई किसने यूज किया है? किसी ने यूज किया है? आई वुड से यूज करो, बड़ा अंडररेटेड टूल है, आपके दोस्त की कमी पूरी कर देगा। उसके अलावा बिंग चैट जीपीटी 4 फ्री में यूज करना है, यूज करो। मिस जर्नी किसका नाम सुना है? किसी ने सुना है मिस जर्नी कौन है? मिड जर्नी तो सुना होगा, मिस जर्नी में भी फोकस करो डार्लिंग। तो मिस जर्नी भी एक इमेज जनरेटिव टूल है। जब मेरा एक्सेस खत्म हो जाता है मिड जर्नी का तो मैं मिस जर्नी पे आ जाता हूँ, मिस्टर जर्नी से मिड जर्नी। प्लेग्राउंड एआई काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो टेक्निकली कंटेंट क्रिएशन जर्नी में राइट फ्रॉम आइडिएशन टू स्क्रिप्टिंग टू क्रिएशन, मतलब अभी क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा था, नहीं तो मैं आपको वीडियो भी बना के दिखाता एआई से। मतलब आपने देखे होंगे आजकल बहुत सारे फेमस पेजेस हो गए कि एआई से ही सिर्फ कंटेंट बना के दे आर पुलिंग इट ऑफ, राइट। सो स्कोप बहुत है, मौका बहुत है। नाउ इट्स टाइम कि आप लोग उसको ग्रैब करो। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ, लाइक आजकल तो फेस दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इंट्रोवर्ट लोगों को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब स्पेसिफिकली जो ब्लॉगर्स थे जिनने आज तक इतना सारा ब्लॉग कंटेंट बनाया है, वो अपने पूरे ब्लॉग को कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर जनरेटिव एआई से वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, अपने कंटेंट को और ज्यादा स्कोप में डाल सकते हैं, राइट। बट वो फायरफ्लाई यूज किया है किसी ने? बढ़िया टूल है ना। तो ओवरऑल ये टूल्स आते जाते रहेंगे। पूरी इस मतलब इस पूरी पीपीटी का सार अल्टीमेटली मैं यही निकालूं कि हम लोगों को एआई अपने लिए यूज करना है, कैसे हम उसको एक्चुअली ऐसे यूज कर सकते हैं कि हमारा हो। तो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, एआई या एनीथिंग, यू कैन आस्क मी। हाय ब्रो। Very good evening, sir. This is Shashank this side. शशांक। Yeah, Shashank this side. Yeah, I'm hi blessed to Shashank. have you right there in the WordCamp. I have a very basic question. Our question is कि आपने भी बताया कि AI can actually replace the works we are being assisting to some sort of assistant. But एक चीज होती है ना कि if something is open for all, तो यूनिकनेस कहाँ से कंटेंट में लाई जाए? फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग द सेम एआई टूल, आई एम यूजिंग द सेम, राइट। एक जो चैटबॉट्स अभी अपने पास आ रहे हैं उसमें प्री डिफाइंड डेटा रहता है, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू मस्ट बी नोइंग बेटर देन अबाउट दिस। सो आईड से कि ऐसे तो फिर हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाता, एवरीबडी वुड बी अर्निंग मनी फ्रॉम गूगल एडसेंस। बट आई वुड सिंपली आस्क जस्ट अ क्वेश्चन कि यूनिकनेस कैसे लेके आ जाए कंटेंट में यूजिंग एआई, नॉट यूजिंग दिस ह्यूमन ब्रेन। वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर भी उतना ही मजेदार है, ठीक है। सो बेसिक आपका क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वन लाइनर में डालता हूं कि हम लोग यूनिकनेस कैसे लाएंगे। अगर सबके पास एक ही टाइप का टूल है, एक ही टाइप की चीजें हैं, तो यूनिकनेस कैसे आएगी, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन। सो वेरी गुड। अब इसका आंसर पहले नहीं था हमारे पास कि क्रिएटिव जॉब्स तो जा ही नहीं सकती है, ऐसा था ना, क्रिएटिविटी कौन ले जाएगा। बट अब सैडली कहना चाहिए, बट अब ये पॉसिबल हो गया है। कैसे? अगर आप किसी इंसान का एक पर्सोना बना देते हो, ठीक है, किसी इंसान का आपने पर्सोना बना दिया, उसकी हैबिट्स बना दी, ठीक है, उसको पास्ट रिकॉर्ड्स दे दिए, ठीक है, किस टाइप का हमें कंटेंट बनाना है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते होगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं अपना चोरी चकारी वाला इंसान हूँ। तो मैं ना मतलब जब मैं पहले डिजाइनिंग करता था तो मैं पिंटरेस्ट पे जाके देखता था बहुत सारे आइडियाज, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता था कि यार ऐसा मिक्स कर सकते हैं, राइट। अब टेक्निकली आपको आइडिया, मतलब आपको अभी भी मेहनत करनी है, आपकी यूनिकनेस है, आपको उस एआई में अपने आइडिया को फिटअप करना है, राइट। वेयर कम्स द यूनिकनेस? जब आप एआई को ट्रेन कर रहे हो
टू गिव योर थॉट्स एंड मतलब टेक्निकली नाउ यू आर द ओनर। अब आप उसको बता रहे हो कि मुझे इस तरीके का चाहिए। जैसे हम लोगों की कंपनी है, हम लोगों की मेरी कंपनी का नाम है ग्रोथ रॉकेट। तो ये जो नाम है ग्रोथ रॉकेट, कई लोगों ने ग्रोथ स्कूल का नाम सुना होगा, वैभव इज अ गुड फ्रेंड, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने पहले नोटिस नहीं किया था, बट ये जो ग्रोथ रॉकेट है ना, हम लोगों ने चैट जीपीटी से ही निकाला था इसका आंसर। क्योंकि हमने उससे पूछा कि यार हमें ना ग्रोथ इम्प्लाई करनी है, हमें ब्रांड्स के लिए वर्क करना है, हमें हमारे क्रिएटर्स के लिए वर्क करना है। तो हम लोगों ने ना काफी डिस्कशन किया था, ऑलमोस्ट हमारा 2 घंटे का डिस्कशन चला था, हमें बहुत सारे नाम मिले थे। देयर फॉर लाइक वी लाइक द नेम ग्रोथ रॉकेट, ठीक है। ऐसी मेरी एक और कंपनी, उसका नाम है इन्फोस्पायर, ठीक है। टेक्निकली उसका चैट जीपीटी से नहीं निकाला था, दैट्स अ ओल्ड कंपनी। बट फिर मैंने ना मतलब इस तरीके से मैंने बहुत आइडियाज दिए थे कि मुझे इस टाइप के नाम पसंद है, ये चीज। तो ही इज बेसिकली असिस्टेंट, आपको उससे बात करनी पड़ेगी और अच्छे आंसर्स आपको निकालने पड़ेंगे, राइट। दिस इज ओनली फॉर अ जनरेटिव एआई, बट व्हेन इट कम्स टू द यूनिकनेस, वेयर इट कम्स टू मिड जर्नी या फिर फाइबर, मतलब जो वीडियोस जनरेट कर रहे हैं या फिर जो इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, राइट। अब आपके डेप्थ पे डिपेंड करता है कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप उसको 3D मॉडल देना चाहते हो, राइट। तो वेयर कम्स योर मतलब योर विजिबिलिटी, मतलब जो मैंने प्रॉम्प्ट वाला आपको बताया ना कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है। अगर आपको सही में एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आता है फॉर एग्जाम्पल, तो यार आपके पास मतलब वो कहते हैं इनडेफिनेट पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब मैं तो सिर्फ नॉर्मल आंसर सोचता था कि यार डॉग सिटिंग इन अ कार ऑन अ मून, therefore आई हैव स्टार्टेड माय प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और अब मैंने पूरी पीपीटी बना दी उसके बेस पे, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन तो नहीं, मैं आपके आंसर को सप्लीमेंट करता हूँ। जावेद अख्तर का नाम आपने सुना होगा। शोले के बाद उनपे उनको बोला गया कि आपने तो क्या किताबें पढ़ी हैं, कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़े, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़े, और उसके बाद आपने शोले लिख दी। तो उन्होंने एक बात बोली थी, लाइब्रेरी आपके लिए भी खुली हुई है। मैंने जो लिखा वो पब्लिक ने पसंद किया और शोले बन गई। तो मैं शशांक को यही कहना चाहता हूँ कि इसके बावजूद जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो वहां रहेगी। उस चैट जीपीटी के बाद हमको हमारी क्रिएटिविटी काम आई। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप आए, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे लगा था काफी जेंजी ऑडियंस आएगी, यंग ऑडियंस आएगी। सर को देख के ना मुझे खुद ही काफी इंस्पिरेशन फील होती है कि मतलब वो अभी भी आए हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और मैंने देखा सर ना लोगों से बात भी कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सर फॉर कमिंग, ठीक है। अदर देन दिस जो ह्यूमन टच है, मैं क्या कह रहा हूँ कि एआई किसी की जॉब कुछ नहीं लेने वाला है अगर आप में आर्ट है तो। ऑब्वियसली यार देखो क्या होता है ना, आज भी आप देखोगे ना, मतलब मैं आपको बड़ा रियलिस्टिक फिगर देता हूँ। ऑलमोस्ट 100% में से ना लाइक 80% लोग मेहनत करते हैं, बट 20% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली पैसा कमाते हैं, ठीक है। यार हम सब लोग ना पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप नोटिस करना, काम उस 100% में से 80% है जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बट स्टिल 20% ही कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं 20%? क्या ऐसा कर रहे हैं? उन लोगों को काम करने से ज्यादा काम करवाना आता है। अब ये मैं मतलब बॉसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको भी आज के टाइम पे एआई से काम करवाना आता है, तो यार यू आर स्टिल इन द टॉप। यूज करो ना, अपना दिमाग लगाओ। देखो ये मत सोचो कि मेरी जॉब चली जाएगी, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ अपने आप क्रिएट करो, कुछ नई चीजें करो। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा फन फैक्ट है, पैसे तो सबको कमाने हैं ना यार, पैसे तो कमाने हैं ना। तो एक मुद्दे वाली बात बताता हूँ। एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कि अगर इस दुनिया में आज ही हम सारा का सारा पैसा इकट्ठा कर दें, ठीक है, और सारा पैसा लेके हर इंसान में इक्वली बांट दें, 10 साल लगेंगे मात्र। जो टॉप 10% लोग थे उनके पास वो वेल्थ वापस चली जाएगी। तो वो 10% ऐसा क्या कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा ही एआई में भी होगा, सिर्फ टॉप 10%, जो टॉप 10% डिजाइनर्स रहेंगे, कॉपी राइटर्स रहेंगे, ब्लॉगर्स रहेंगे, वो सरवाइव करेंगे ही, उनकी कोई प्लेस कहीं नहीं जाने वाली है, राइट। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उनको आता है यूज करना। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एडोब है,
मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब लोग आज ही से ही लगे हुए हैं, एआई को क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? और मैं सच बता रहा हूँ, एआई की वेब थी, मैं वेब थ्री क्रिएटर हूँ, मतलब वेब थ्री जिसको आइडिया होगा, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, बहुत पैसा डूबता है। तो मेरी वेव चल रही थी एंड सडनली मेरी एक दो वीडियोस एआई पे बहुत ज्यादा चल गई, राइट? और मुझे बाय डिफॉल्ट एआई बहुत पसंद है फ्रॉम डे वन, मतलब लोग वीआर की जब बात नहीं करते हैं ना, तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट है उस चीज में। तो मेरी एक वेव चली और मैंने वो वेव राइड कर ली, और ये वेव आती रहती है। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वेव है, आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप एआई को इस तरीके से यूज करो कि मतलब आप कोई भी वेव राइड कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, आप चैट जीपीटी को लेके बात करो, उससे दोस्त से पूछो, वो आपको बताएगा कि मुझे ये आइडिया आ रहा है, नहीं ये पसंद नहीं आया है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। जब आप उससे बात करोगे ना, जब आप रियल उसका वैल्यू समझ में जाओगे, तो आप लोग ना बहुत मतलब एम्प्लॉयज की सही में जरूरत नहीं पड़ती है व्हेन वी डू दीज थिंग्स, राइट? मतलब ऐसे मैं किसी को थ्रेटन नहीं कर रहा हूँ, बट यार मुझे ऐसा दोस्त कभी मिला ही नहीं था जो मुझसे ऐसी बातें करे। मतलब उन चीजों को मैं सपने देखा करता था। टोनी स्टार का आयरन मैन किस, मतलब जारविस कौन कौन जानता है, जानते हो ना? तो यार दिस इज जस्ट द स्टार्ट। एंड हमारा ना जारविस जैसा ही आएगा, हम सबके पास एक दोस्त होगा जो जारविस होगा, कि मतलब जो होता है ना मॉर्निंग में उठ के बोले गुड मॉर्निंग सर। तो गाइस, दैट वाज इट। मतलब इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस ना, तो आप इंस्टाग्राम पे शूट कर सकते हो। एंड यू रियली बीन अ लवली ऑडियंस। ठीक है, थैंक यू गाइस। What a mind-boggling session, Yash. Thanks for shedding light on the subject. Back to track as we continue to enjoy WordCamp Bhopal. Let's take a moment to recognize our silver sponsors who have generously supported this event. WooCommerce, Softicolors, Eloquus, Soft Solutions, Cards, and Public Remote. Thank you for being the backbone of WC Bhopal. I now take the pleasure to introduce Kishan Jashani, a seasoned WordPress engineer with over half a decade of experience, dedicated to creating accessible websites for mind-size and enterprise-level clients. In this session, he'll explore the intersection of WordPress craftsmanship and digital accessibility. Let's welcome Kishan. Hello. Hi everyone. How is it going? Good. Nice. So, hi, I'm Kishan. Uh, I'm based in Surat, Gujarat. Basically, this session is called accessibility, the big picture. So, let's talk a little bit about me. I'm a senior web developer at Buddy Boss, and I have been working as a web front-end developer as well as a WordPress developer. So, this is about me. So last year I got opportunity to work with one of the client on front end. Those want to improve the accessibility of their sites. So at that time, it was in first, it was little bit overwhelming for me, how to start and all the things. So I will show you how you can improve, how you can start with accessibility. Like world it is This session is all about mental model or a blueprint of accessibility, like how you can start and how you can learn accessibility. So let's dive into it. So first of all, what is accessibility? So anyone here who knows what is accessibility? Okay, only one. Oh, two, three peoples. Nice. So it is. So for developers, I will show you how you can start and how you can learn. And for project manager, it is like you will get the knowledge, technicality behind the accessibility, how you can call your client and how you can achieve it. Okay. So let's get started. Accessibility is a
something, regardless of disability, everyone should be able to use it. So what do I mean by regardless of disability? Is like it should be optimal user in experience. Like anyone, not just it is not just for disabled peoples. For example, there is a people who can't see. So for all those user will use a screen reader or assistive technology called a screen reader. And this is not just one tool. There are many other tools too. So this session is a lightning session, so we will only focusing on screen readers. So, and this is the definition provided by W3C. And sorry, accessibility is a practice of making your website accessible by as many people as uh, possible. So this is the standard definition by MDN Dope. So why do we use accessibility? So first, inclusivity and equality. So if you make your website accessible, you can include all the people with disabilities and people without any kind of disability. So so all the people will be on the equal feet. Second is legal and regulatory compliance. So many countries like US and UK, there are certain criteria, WCAG criteria, which needs to follow to avoid the any regulance complementary compliance. Sorry, expanding audience reach. So by making your site accessible, you can expand your customer base. Like currently, as per the report, currently 16% of the global audience are global audience are around like they are facing disabilities. But by making your site accessible, you can expand your audience reach. So next is better user experience for all. So if you are making your website accessible, so by default you are attracting people who want to interact online on your store or any content of your site. Next is business advantage and innovation. So as I said, all around 16% of global populations are experiencing disabilities problem. So you can expand your the marketplace is around $6 trillion with spending power of disabled people. So you can indirectly, by making accessible site, you are expanding your business too. So next is all the users have their different needs. Like disabled people with people who can't see, they use a screen reader, as I said, and other tools are also available for different types of disabilities. So next is screen reader. So let's see what is screen reader. Screen reader is a piece of software which are installed on your operating system by default to interact with image. Screen reader spoke your content of your web page. Like if there is an image, so people who can't see, they will be able to know what is on the screen by just using screen reader. So there are different screen readers as per the operating system. Like Apple products uses voiceover, like iPad, iOS, iOS OS, iPad OS, and iOS. Sorry, and Windows uses narrator, and on Android, talkbox is there. Talkback is there. Sorry. So basically, screen reader tells more information about the content. Like on screen, you have a button. Then the screen reader tells people like there is a button on your screen. You can perform some action on it.
So people who can't see will able to tell more information about it. So let's see how screen reader works. Sorry, hello. Can you play this video? Platform. See and that is what the word. The base level of the vibrations. Expansion. Download the step. Download the install software. Download the install games. Universal expansion. Well, the install software. Download installation. Learn software. Installation. Community software. Installation. Conduct revolution. Overall plan. Take 2023 hours of overall plus. So, see and that. This is a combination that has to apply things. Use installation. Download step. Download and install software. Download and install screens. Universal expansion. Download and install software. Download installation. Learn software installation. Community software installation. Conduct revolution. Overall Pro. Take 2023 hours of overall plus. So that is how screen reader works. Like screen reader works from top of the page along the way to bottom of the page. So it tells user that what elements you are on. They spoke that element, like this is button, this is a nav link, or this is link. So all the additional information it provides to the user. So let's see how screen reader works. So Platform. See and that. So screen reader basically works on accessibility API. Screen reader calls the accessibility API to know what is on the screen. So accessibility API provides the more information about the content which are displayed on the screen. So accessibility. So let's see how accessibility works. So accessibility calls the accessibility tree API, and accessibility tree is a accessibility object which provides content of the web page to accessibility API. So basically, screen reader calls the API, accessibility API, and it parses the information from accessibility tree. So let's see. So how you can interact with accessibility tree? So by using semantic content on your presentation, like semantic content means on your page you are adding header. So you can use h1 tag for that, like it is heading. So it will tell screen reader that h1 tag means it is a level 1 heading on your screen. So you people who use screen reader or assistive technology will know that this is the level 1 heading, and they can move around all the way. Like if they don't want to go inside the h1 tag, then they can move, or they can move to any inside accessibility tree. So that is, the accessibility can't be achieved only with semantic HTML, but you need to do little bit more on it. Like you need to use area attributes and role. Area attributes and role is a bit more topic, a bit like bigger topic, but it is a lightning session, we'll cover little bit about it. Like it provides additional information about the HTML tags. So screen reader knows what is it, and it provides meaningful information to user. So let's think of, like we have a drop down menu on your screen. So drop down menu has two stats, like open, or it could be a close. So for open, like you need to interact little bit with JavaScript. Like it could has area expand true or false. Like if you click on
drop down menu, then you need to modify the state of that drop down and make it true or false. Like if you are closing that, then that state should be false. So screen reader, so user who can't see, they will know the current state of the drop down menu. It is open or closed. So can you please run a demo? Friend? So basically, this is a small demo. Like yes, this one. So this is the button which I created using link by using anchor tag. So uh, just play it. Like if I click on it, it will open a alert box, and if I press enter on it, then also it will open a alert box. But if I press space bar, then it won't open this dialog. Can you try with space bar? So it will not work with space bar. So let's check it with semantic HTML. Like it is a button. So if you are pressing this button, then there should be something like uh, action. Like if you press space bar or enter, it should be open. It should open. Like if you are triggering any action, you should use button for that. Basic example is on any site you can see navigation with sub menu. So that time you should use for the sub menu, you should use button for that. So any user who uses screen reader, they will press spacebar and they can open a sub menu, and vice versa. Can you play space on it? Click space. Yeah. So when someone press space bar on it, it is a button. So previous one was link that was just designed by CSS. So I don't have access. Otherwise, I will show you in inspect element and all. So that is how screen reader works. Can you play slide? So that was like basic information about accessibility. So now, if you want to deep dive into this topic, you can go to this WCAG Web Content Accessibility Guideline, which provides more information about accessibility. So you can use this link and go there and check it out. Yeah, so that is it almost. And next is tools. So you can use these tools to check your content is content meets accessibility guidelines, but you can't rely on these tools. Like it gives 30 to 50% information, like correct information, but you can't rely on this. Like it won't tell you like area expanded true false is correct or not. So you need to check a few example which is already on W3C website. So you can use XDevTool Web for this is the browser extension, and next is Peli, which you can implement to like automate test for automate testing. You can use Peli and accessibility checker plugin. If you are content writer, then and you want your content to be accessible, then you can use accessibility checker plugin, which provides more information about like where to use area attributes, and it gives good information. So you can interact with more audience on your site who is facing disabilities. Yeah, thank you. That is it. If you have any questions, no one, that's fine. Thank you so much, guys.
Thank you, Kishan, for your lightning talk. I now take the pleasure to introduce Shamli Sulake, our next speaker. As the WordPress tech lead at Wisdom Labs, Shamli brings more than half a decade of valuable experience with her. Her secret to success? Organized planning and strong documentation. That's what she says. Today, she's here to share her expertise in the session titled Plugin Audit Why and How. Welcome, Shamli. And Shamli is joining us. Just to add on, if you all are having a good time here, listening to the sessions that you're liking, please do not constrain yourself from sharing the same on your socials. It's time to make WordCamp trendy. You can use hashtag WC Bhopal on any or all of your socials, let be LinkedIn, Twitter, Facebook, or Instagram. Yeah, we'd find you there. Thank you. Yeah. Can you please welcome Shamli with a huge round of applause? This is right. Hello, good afternoon, everyone. So, how's the event going so far? Is it nice? Is it nice? I can't hear you. Okay, I'll try my best to make it more nicer for you. So, the topic of the today's presentation is plugin audit. As the name suggests, it is a kind of audit for the plugins. So, let's explore what it is. Before starting, a question for you. Just a minute. Okay, let's start with the question. Before the question that I am going to ask, how many developers or implementers in this room? Can you please raise your hands? Great to see. How many site owners? You may have your personal site or the business site. Okay, cool. So this question is for you or any other that you can answer. So for any site you worked on recently, do you remember how many plugins were there on your site? Okay, at least you remember the range 10 to 20, 15 to 20. Okay, very less hands I am seeing. So the second question. What's the highest plugin count you have ever seen on any website? Is it 50 plus? 100 plus? Okay, interesting. So I will give an example of a recent project that I worked on. The plugin count was this. 84 plugins were total, out of which 52 were active and 32 were inactive. That the client himself wasn't knowing why they were installed. And he came to us with this plugins situation and some issues. So the issues were the site was loading very slow. Site was taking around 6 to 8 seconds to load, and the reason was basically the plugins, number of active plugins. The second was the maintenance of site was becoming difficult. So let's say there were 40 plugin updates available, and the day we updated the plugins, next day again 7 to 8 updates were available. So it was going very difficult to keep the maintenance of the plugin and the site overall. The third issue was okay. I think it hung once again. So the issue was there were some plugin conflicts. Some let's say there were overlapping plugins with for the same feature, and they were conflicting on the same page. And we need to debug everything and find the reason why they were conflicting. And there was one more issue is the security concern. So you may all know that outdated plugins or outdated core of the WordPress may cause some vulnerabilities or security threats. And all of these issues, the speed, the security concerns, or the plugin conflicts, there was main reason of this is there was no track of plugins kept. I mean, the client's team may have, let's say, 4 or 5 admins. They themselves were not knowing
when their plugins were installed, who installed them, why they were installed, are they actually active on the site or are they actually needed on the site at the current situation. So these are the common issues that you may all face sometimes on your sites. There is no track of plugins kept, or you may not remember अरे हाँ ये plugin कब install किया था, क्यों किया था. So this is exactly the plugin audit is for. So what it will provide you? Good. The plugin audit will help you keep track of the plugins. So their active versions, their status, are they active or not? Are they vulnerable? Are they compatible or not? Are they compatible with the latest version of PHP, latest version of WordPress or not? Or if you actually need them, or you can just get rid of them. So the plugin audit is exactly for this. It is a kind of audit of all the plugins on your site. So it may help you reduce the plugins count whenever applicable, and it may help you keep the maintainability of the site even better than before. So what you can expect from this presentation is, yeah, this is what you can expect from the presentation. The steps of the plugin count, what actually you can follow, the outcome that you can achieve, and we will do a small plugin audit together. So this plugin audit consists of 3 steps: remove, reduce, and improve. So let's see what each step contains. So the first step is remove. As the word suggests, you will be removing some plugins. There may be some plugins which are not actually needed on the site. They are no longer needed, or there may be some deactivated plugins which are not needed now. So you can just remove those plugins, either deactivate or permanently delete them to get rid of the plugins. So it can be done for the active plugins as well or inactive plugins as well. The next step is reduce. So what you will reduce is, you will reduce the duplication of the plugins. Let's say, for example, you have 2 plugins. One plugin is providing two-factor authentication for your site for the login. And another plugin is a security plugin, which provides the two-factor authentication as well, some security features as well. So as you can see, the two-factor authentication is an overlapping feature in both the plugins. So you can just deactivate the plugin which only provides two-factor authentication, and you can keep the plugins which provides two-factor authentication along with the other features. So as the name suggests, you are reducing the duplication and reducing a plugin count. So the third will be improve. So what it contains, let's say there may be 2-3 plugins which are providing similar kinds of features. For example, you have an e-commerce site and you have to import some orders to the site, maybe offline orders. So you have installed a plugin to import orders. Let's say you want to export some database of the users. So you are installing a plugin to export customers. And let's say you want to import products or coupons. Then you are installing another plugin. So in this case, you can install all-in-one import and export plugin, which will provide all these features. And you can get rid of these 2-3 plugins, which are providing a similar kind of features. So in this case, you can improve your plugin, improve the features, and just do all this job with a single plugin. So this improve step is exactly for that. Just a note, the improve step may need to have technical understanding of the features, and if the plugin that you are going to replace or keep the better plugin is actually serving the purpose of your requirements. So this may need some bit of understanding and the technical understanding of the site and the features. So I hope you understood all these 3 steps. There, remove, reduce, and improve. So what outcome you can expect from this plugin audit is this one: reducing the unnecessary code loading on the site. So if you know, there are some plugins which load the code or execute the code on every page load, or for the developer specifically on the init hook. So this increases the plugins load on every page load, even if it's on the front end, on the back end, the plugins code is executed. And it actually causes unnecessary code on the site if the plugin is not in use. So you can get rid of that code loading on the site, and it eventually can improve the speed of your website. So the plugin audit will serve this purpose. Second one is the improvement of the speed, and the third is maintainability of the site. So you yourself can self-maintain the site and which plugins are there on the site or where they were installed, and eventually you can just optimize your plugins as required. So with this, let's do a plugin audit together. Can you read this list, or should I just read it for you?
Is it readable to the last row? Okay, it's a small example of number of plugins on the site. So the plugins are like backup your site, blog post filter, database backup for WordPress, download media, duplicate page, image carousel, search and replace plugin, email log, testimonial slider, display videos with Lightbox, and WordPress SEO. So these are some plugins active on a website. Let's assume that. So we will apply all these 3 steps to this list and let's see what happens. So currently the status is, if you can count, there are active plugins 8 on the site and 3 are inactive. So the total plugin count as of now is 11. So let's see. First we will apply step 1. Remove. So let's start with the inactive plugins first. So there are 3 inactive plugins on the site: blog post filter, download media, search and replace. So what you have to do is just read the description of the plugins, what the plugins actually does. Let's say blog post filter is filters the blog post by their categories and tags. So let's say if you are a client and you may remember that, okay, I had installed this plugin a few months ago because I had to try the search and replace the search feature on my website for the blog post archive page. And now you may not need that filter. So you can just delete that plugin. So all you need to do is you just need to understand what the plugin was doing and why you installed it. And is the feature actually in use now? So let's say this is not needed, you can remove that plugin. The second is download media. What it does it allows images in the media library to be directly downloaded one by one or in bulk, maybe. So let's say you are the designer or you are the maintainer of the site and you may need to download the media. So let's say you have some assignments feature and users are uploading the PDF files and you may need to download and review them. So in that case, you can keep that plugin and install or activate it whenever required. So you can keep that plugin. The third is search and replace. So what the plugin does is, it does a quick search and replace tool. It provides a quick search and replace tool for your blog post. So in that case, you can keep that plugin or delete that plugin according to your requirements. So let's assume that in this case of a client, he doesn't want these 2 plugins, blog post filter and the search and replace. So he will basically delete those plugins. So the inactive 3 plugins count now became 1. Let's go to step 2. So the second part of step 1 is remaining. Now we got rid of some inactive plugins. Now let's try this for the active plugins as well. So there are, let's say, these plugins, out of which the duplicate page plugin is to actually duplicate some pages. And let's say you very less frequently require this plugin. You, for example, you duplicate the pages once in a month or once in a 2 months. So there is no need of keeping this plugin active throughout your span of time, right? You can just deactivate that plugin and activate whenever required. Just do the job and deactivate it again. So in that case, you can keep such a plugins deactivated. A best example of it would be a maintenance mode plugin. So let's say you need to enable maintenance mode once in a while. So there is no need of keeping the maintenance mode plugin active throughout your website or throughout the span of time. You can just deactivate it and activate it whenever required. So such a kind of plugins can be deactivated, activated according to the job that you want to run on the site. So this is what exactly step 1 is doing. So let's go to step 2. So if you can see, there are 2 plugins. One is backup your site and one is database backup for WordPress. So what backup your site is doing? It is a sophisticated backup and migration plugin for WordPress. It takes backup of database and files. And the database plugin for backup for WordPress, as the name suggests, it is taking backup of database. So if you can see, the database backup feature is available in both the plugins. But the first plugin is providing additional feature of database backup of files. So in this case, you may not need the second plugin because the first plugin is doing that job. So you can deactivate that plugin and keep the only first plugin, which is doing both these jobs. So this is the kind of duplication you are reducing in this step. Let's say the third step, improve. So I have just given an example of improve. Let's say in this case, the client side has these plugins. Image carousel, what the plugin was giving, it displays multiple images in a beautiful slider. The third you can see is testimonial slider.
it gives the slider for testimonials of the site or the text content you can see. And the third was display videos with lightbox. What the plugin description suggests is it shows videos on your pages in a responsive carousel slider. So if you can read the description carefully and read the name, these three plugins, image carousel, video slider, and the testimonial slider, are basically providing carousels or sliders, but for different forms of content. One for the image, one for the testimonials or the text you can see, and one for the videos. So in this case, if you can find a plugin which can give the slider or carousel for all kind of content, may it be image, video, text, so it will serve your purpose, right? So there is no need of having these three different plugins for the same job. So this is the example of improve. So you can just replace all these three plugins with a better alternate plugin. Let's say it as all-in-one carousel plugin. For example, so it will serve the purpose. You can get rid of these three plugins and have only one plugin on the side. So these three steps will actually help you reduce the plugins count and keep the track of plugins. So I hope you understood these three steps, right? Okay. So these were actually the steps of the audit. Now what the audit will look like, let's see. So we designed a format of a spreadsheet in which we list all the plugins on the site and the actions taken in the plugin audit. So if you can see, there are four or five columns. One is the plugin name, the second is plugin description, third is the version, fourth is status, and fifth is action taken during this audit. So if you can see in the second row, blog post filter, as we just deleted that plugin because it's not needed. So you can just write down action needed is action taken is deleted that plugin. Or if you deactivated that plugin, you can just note it down, deactivated or replaced or whatever action you have taken. So what actually it will do is it will keep you remember what action was taken and why it was taken. And you can eventually keep the audit doing regularly and keep track of the plugins and their actions. So this will also help you understand the status of the plugins or their versions. Let's say you are doing monthly maintenance of the site and you are updating some plugins. So you will be able to keep track of the plugins versions over the period of time. So if something happens, some features are getting broken on the site, then you can just understand what was the last active version and can track if there is any conflict with the plugin accordingly. So this is the status before doing the audit. So as you can see, there were active plugins on the site, 8, 3 were inactive, and the total plugin count was 11. So after the audit is done, the status is this. The active plugins count is 4, 2 are inactive, and the total becomes 6. So out of 11 plugins before, we were able to achieve the number 6 after the plugin audit. And there are some additional columns added in this audit sheet. So if you can see, the installed on. So when this plugin was installed, the date you can mention there or by whom it was installed. Let's say your site is maintained by 3 or 4 admins or multiple admins. So in this case, you can just keep track. Let's say this plugin was installed by a freelancer developer, by the content team, or by whichever person who installed that. So it will help you keep track of the plugins. Then the last one was last action taken. So what was the last action taken and what it was actually. So both these things you can just keep track in that audit sheet. So this is the basic format of the audit sheet that we follow for many clients and many projects. You can follow that and just keep track. It will help you keep track of the plugins. Okay. So the recent example, the example that we saw was only with 11 plugins and they were very simple plugins. But your site may not be that simple. It may have 50 plugins, it may have 100 plugins. You may be not able to track the duplication. You may not be able to identify which plugins you can reduce. So that this task, actually the plugin audit task may not be super easy for you. So what the solution is, whenever you are doing the first time audit, it may be difficult, but please try to make it a routine habit, a routine task. Let's set a frequency, let's say once in a month, once in 2 months. So that will eventually help you improve your site and keep better track of plugins throughout the performance of the site. So that's why the plugin audit is designed for, and you can just try out them with your personal sites or the client sites or the business sites. Let's summarize all the 3 steps once again. The steps are remove,
reduce, and improve. In remove, you are just removing the plugins, may it be active or inactive plugins, which are no longer needed on your site. In reduce, you are reducing duplications. That is the plugins which are providing similar kinds of feature or overlapping with each other. And the third step is improve, in which you are improving or replacing the plugins with a better alternative or with a all-in-one kind of plugin, which provides all set of features. So this is exactly the plugin audit is for. And I suggest to make it a routine habit or set of frequency for your site for doing the plugin audits. So this is the presentation was all about. Thank you so much. And in case of any questions, please feel free to reach out to me on Twitter or on email or after the session outside the room. Thank you. So the last time that we met Shamli, she told us she's new to WordCamps, and this is her first time joining us as a speaker. Uh, can you believe it? Thank you so much, Shamli, for joining and shedding light on this important topic. Um, Coming next, it's my pleasure to introduce Sunil Kumar Sharma, a passionate WordPress developer whose superpower is coding. Profound enthusiasm for crafting dynamic websites and using WordPress to empower businesses, Sunil's journey is one of continuous growth and excellence. Today, he's here to share his insights in the session titles Scaling WordPress, Performance and Optimization Techniques. Let's learn from Sunil Kumar Sharma. Can you please have a round of applause? Thank you. Thank you. ओके सो मैं वर्डप्रेस पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और हमेशा एक दिक्कत आती है वो है कि ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट बना ली प्लगइन इंस्टॉल कर लिए थीम इंस्टॉल कर ली पेज बिल्डर इंस्टॉल कर लिए बट लास्ट में होता है कि वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है एचसीओ स्कोर और पेज स्पीड स्कोर का काफ़ी इश्यूज आते हैं तो उनके सॉल्यूशन के लिए मैं पिछले कुछ 2-4 महीनों से मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं और जो जो मुझे समझ में आया या जिनसे एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया वो मैंने आज कवर किया है हेलो तो इसमें एक तो ऑप्टिमाइजेशन जो है
ये एक रेगुलर ऑनगोइंग टास्क है, ये वन टाइम टास्क नहीं है। ये जब तक मतलब रेगुलरली एक तरीके से मेंटेनेंस है ये ऑप्टिमाइजेशन भी, क्योंकि जब भी कोई प्लगइन अपडेट आता है या थीम अपडेट आता है या जब भी कोई हम कस्टम ब्लॉग लिखते हैं, तो उसको भी एक रेगुलर एक मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है। और फिर थोड़ा चैलेंजेस हमारे को क्या क्या इश्यूज आते हैं, और उसके बारे में हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, कंक्लूजन और जो भी फिर उसको आपको पूछना हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वेबसाइट स्लो डाउन हो जाती है, एक रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं तो वेबसाइट स्लो हो जाती है। दूसरा है कि हमारा जो ट्रैफिक है, वेबसाइट ट्रैफिक, उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। एंड जो स्लो स्पीड जो वेबसाइट होती है, तो कई बार क्या है कि यूजर को ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी क्विट कर जाता है, तो बाउंस रेट पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है इसका। तो सॉल्यूशन जो बेसिक हम मतलब जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट बेसिक बेसिक हम क्या क्या कर सकते हैं कि एक तो क्वालिटी होस्टिंग, जो जिसका सपोर्ट अच्छा हो और रिलायबल हो। ठीक है। दूसरा कि वर्डप्रेस को रेगुलरली हम अपडेट करते रहें, वर्डप्रेस का कोर हो या थीम या प्लगइन जो भी हम यूज कर रहे हैं, इन सबको रेगुलरली हम अपडेट करते रहें। सीडीएन जो वेब पेज स्पीड में इन सब में हेल्प करती है, वेबसाइट लोडिंग में हेल्प करता है, तो वो हमें यूज करना चाहिए। ठीक है। एक अच्छा कैशिंग भी होना जरूरी है, उसके लिए हम कोई भी बेटर प्लगइन या फिर अभी तो बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर सजेस्ट भी करते हैं कि उनकी होस्टिंग पे कौन सा प्लगइन सही से काम करेगा, तो हम एक कैशिंग प्लगइन भी रख सकते हैं। ठीक है। फिर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम जैसे इमेजेस के अंदर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी वेबपी का है कि वेबपी काफ़ी लाइट वेट होती है, सीएसएस को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मिनिफाई कर सकते हैं, जेएस को कर सकते हैं, और डेटाबेस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए लेजी लोडिंग भी हम लगा सकते हैं वेबसाइट पे। कोड क्लीनअप और ऑप्टिमाइजेशन मतलब कोड के अंदर भी रेगुलर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो हमें करना चाहिए। और सबसे जो मेजरली होता है ना कि एक टाइम के बाद वर्डप्रेस को डीकपल कर देना चाहिए, मतलब कोड बेस अलग, मीडिया फाइल अलग, डेटाबेस अलग। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता, वो आपकी फाइल्स को और यूज़र को सर्व करने के लिए बहुत है। फिर मीडिया अलग रहेगा, डेटाबेस अलग रहेगा, तो सबका मतलब एक का जो काम एक बंदा कर रहा है उसको तीन लोग करेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसके अंदर भी जान आ जाएगी। ठीक है। कोड क्लीनअप के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एक तो सीएसएस को जो है हम थोड़ा ब्लॉक वाइज लिखना शुरू करें कि लाइक एक पेज पे हम 4 या 5 सेक्शन अगर यूज ले रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे सेक्शन ऐसे होंगे कि वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे होंगे वेबसाइट के अंदर, तो हम हर जगह अलग अलग सीएसएस ना लिख के उस सीएसएस को कुछ इस तरीके से ट्यून करें कि अगर इनर पेजेस में कहीं उसमें चेंजेस है, तो हम उस स्पेसिफिक क्लास को या आईडी को टारगेट करके हम वो एक माइनर जो चेंज है उसको हम कर लें, पूरा ब्लॉक दोबारा ना लिखना पड़े। तो ब्लॉक लेवल पे हम सीएसएस लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि अभी मैं जैसे जैसे थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को स्टाइल लिंक का जो मेरे को मिला, सो इसमें ये काफ़ी चीज़ें बताता है सीएसएस के बारे में। मैंने इसके लिए इसको सीएसएस के लिए ट्राई किया है एससीएसएस में। तो मतलब फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली जो हम यूज़ करते हैं फॉन्ट के लिए, उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, उसको डिफाइन करने के लिए किस ऑर्डर में हमें उसको डिफाइन करना चाहिए। अ, ये फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, लाइन हाइट, ये किस ऑर्डर में हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनका भी बहुत इम्पैक्ट आता है। ये बहुत छोटा-छोटा है, बट ये सारा मिलकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो उस ये टूल यूज़ करके मैंने उसपे भी काफ़ी ऑप्टिमाइज़ेशन किया है। ठीक है। फिर हम सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या फ़ॉन्ट और इमेजेस इनको प्रीलोड कर सकते हैं, प्रीफेच कर सकते हैं, डीएनएस प्रीफेच लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि मतलब ये बेसिकली ब्राउज़र को बताते हैं कि आपका जो फाइल्स हैं सीएसएस, जावास्क्रिप्ट है, वो कब लोड करनी है। ठीक है। हम नहीं करते हैं जब ये कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वो जब हमारा पूरा पेज लोड होता है ना, वो उस टाइम लोड करता है। प्री बैच प्री लोड हम अगर ये चूज इनमें से कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो वो बताता है कि पहले हमें ये ब्राउज़र को बताता है कि ब्राउज़र ये लोड कर ले, तो उसमें ये बेनिफिट देता है। तीसरा जो जावास्क्रिप्ट है उसको एसिंक या डिफर रखनी चाहिए, इससे काफ़ी पेज स्पीड में काफ़ी इम्पैक्ट आता है, वेबसाइट लोडिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है। इमेजेस का मैंने बताया कि वेबपी या एवीआईएफ हम यूज़ कर सकते हैं। वेब फॉन्ट जो वेब फॉन्ट होते हैं उसको सीडीएन से ना करके हम लोकली यूज़ कर लें, तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कई बार होता है कि सीडीएन में भी दिक्कत सीडीएन में भी आ जाती है। और
वो फिर बहुत मतलब वेबसाइट पूरा एकदम से डिजाइन पूरा खराब हो जाता है, लेआउट खराब हो जाता है, और लोडिंग में भी काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक सीडीएन से भी तो ब्राउजर जाएगा, कनेक्शन बिठाएगा, फिर वो लोड करेगा। तो फॉन्ट ऐसी चीज है, हम वो लोकली हम कर सकते हैं यूज उसको। उसके बाद अ, जो इमेजेस का है, इमेजेस हम जिस साइज में यूज कर रहे हैं, लाइक 420 बाई 420 का हमें एक ब्लॉक है, और हम उसमें यूज कर रहे हैं 720 बाई 720 का इमेज, तो वो इमेज वहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा है उस ब्लॉक के लिए। तो हम जो साइज है ब्लॉक का, उसी साइज की अगर हम इमेज यूज करें तो भी काफी इम्प्रूवमेंट में आता है वेबसाइट के अंदर। ठीक है। फिर सबसे जो डाटाबेस में ऑप्टिमाइजेशन है, वो जो मैंने फेस किया है कि जो हमारा डब्ल्यूपी ऑप्शंस टेबल जो होती है, उसके अंदर जो ऑटो लोड होता है वो भी प्रॉब्लम करता है। अगर नंबर ऑफ ऑटो लोड का है वो काउंट ज़्यादा रहेगा, और वो लाइक 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका जो साइज ऑटो लोड का। 100 KB से ऊपर जाएगा तो वो वेबसाइट को स्लो कर देगा। तो ये बहुत मतलब मेजरली मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐसा फेस किया है कि जिन वेबसाइट्स का ऑटो लोड का साइज 100 KB से ज़्यादा है, उनका पेज स्पीड बहुत स्लो आता है। ठीक है। कोड में जो अभी मैंने बताया प्री लोड, प्री फैच, ये जो हम यूज करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल है कि जो डब्ल्यूपी रिसोर्स हिंट, ये हुक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट लोडर टैग जो होता है, ये हम यूज कर सकते हैं एसिंक और डिफर के लिए। और एक चीज और है कि जो हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ना, कि एच टी टी पी एस, वो हमें हटा देना चाहिए। सो ब्राउजर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि वो एचटीटीपी से आ रहा है या एचटीटीपी से आ रहा है। या तो आप फोर्सफुली सबको एचटीटीपीएस रखो, अगर आपको नहीं पता कि पता नहीं कौन सा रिसोर्स कहाँ से आएगा, तो वो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दोनों प्रोटोकॉल हटा दो, और वो ब्राउजर अपने आप डिटरमाइन कर लेगा और वो अपने आप यूज कर लेगा उसको। ठीक है। डीकपल में क्या है, डीकपल में जैसे एडब्ल्यूएस के बारे में सबको पता है, तो एडब्ल्यूएस के हिसाब से मैं बताता हूँ कि डीकपल में कोड बेस हमारा EC2 पे रख लेते हैं, जहाँ की मतलब मेन सर्वर हो गया। ठीक है। तो कोड बेस हमारा रहेगा EC2 पे, डेटाबेस को हम RDS में रखेंगे, और जो हमारी मीडिया फाइल्स हैं जो भी, उसको हम S3 के अंदर डाल लेंगे। ठीक है। तो एक प्लगइन यूज कर सकते हैं, कोई भी प्लगइन जो मीडिया फाइल्स को S3 में अपलोड करे। मैंने अपना खुद का एक प्लगइन लिख रखा है, जो अभी लाइव नहीं है। ठीक है। मतलब वर्डप्रेस रेपो पे नहीं है, बट हाँ वो बहुत इजी है, बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस वाला। तो वो हम खुद का प्लगइन यूज करके, और जो भी मीडिया फाइल्स हैं उसको हम S3 पे अपलोड कर लें। ठीक है। तो ये डिकपल करने का मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है जब भी वेबसाइट एक स्केल पे बड़ा होता है, जिनका रियल टाइम या फिर आप बोलो दिन भर का जो पेज व्यूज है वो लाखों में जाता हो। ठीक है। तो उनके लिए बहुत सही चीज है ये। देखो, ब्रो, ये नेक्स्ट स्लाइड है। So, वही है कि ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक रेगुलर टास्क है, इसको कभी भी हम वन टाइम नहीं बोल सकते। और मतलब मेरा मानना ये है कि अगर हम महीने के कुछ दिन या कुछ आवर्स अगर इसके लिए डेडिकेटेड रखें, तो ये हमारी वेबसाइट के लिए बहुत सही है, और प्रोडक्ट बेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट के लिए। हमें लाइक हमें अपनी बॉडी को भी फिट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, टाइम से उठो, नहाओ धो, एक्सरसाइज करो, टाइम से खाना खाओ। तो वेबसाइट भी वैसा ही है, उसको भी टाइम टाइम से चाय पानी चाहिए, तो उसको देते रहना चाहिए। ठीक है। और हाँ, तो यही है। अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नहीं कर रहा भाई काम। हाँ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। सो ऑटो स्केलिंग का क्या है कि देखो, ये जो चीजें मैंने अभी बताई हैं वो एक डेवलपर के लिए है। ऑटो स्केलिंग में कहीं ना कहीं डेवऑप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और मुझे नहीं पता कैसा है, बट अभी जो डेवलपर्स है ना, वो हर होस्टिंग के साथ उतना कंफर्टेबल जोन में नहीं है। लाइक AWS में भी आप जाते हैं
तो कहीं ना कहीं डेव्स की एक डिपेंडेंसी है, डेव्स का एक बंदा होगा वो आपको हेल्प करेगा। ऑटो स्केलिंग भी हेल्प करता है, बट उससे पहले ये वो चीजें हैं जो आपको इनिशियली करनी है। ऑटो स्केलिंग तो एक बाद का पार्ट है, पहले आपको मतलब कोड ठीक करना है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक करना है, आर्किटेक्चर ठीक करना है, उसके बाद हम ऑटो स्केलिंग पे जाते हैं। तो ऑटो स्केलिंग क्या बेसिकली करता क्या है कि अगर आपके एक सर्वर पे लोड ज्यादा हो गया तो वो लोड को डिवाइड कर देगा दूसरे सर्वर पे बेस्ड ऑन आपका जितना भी लोड बढ़ रहा है। तो बेसिकली वैसा है। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। Thank you, Sunil, for the wonderful session. So now let's go for a high tea. Um, we'd have a panel discussion after the high tea at 3:40. So it would be rescheduled to 3:45. So let's meet at 3:45 p.m. sharp. Yeah. Thank you.
So, we see and this is a information that is to find regions. Nice, it's pricing. Let's start down with the instant somewhere. Down right with these games. You was pricing. Down with the somewhere. Down with these pricing. Down somewhere with these pricing. Community something pricing. Enough navigation. Overall for 2023 hours and 12 plus. Defense कसं सहभागी असण्याची असले उदाहरण की मैं this time जो defense कैसे है सहभागी असण्याची ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं this time जो मैं हाथों को लगाने में मैं family में थोड़ी सी चीज ऐसे टाइम मेरे ऊपर घूमे हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइस ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं दिस टाइम जो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं दिस टाइम जो तो मैं फैमिली में थोड़ी सी So, currently absent from seeking so sure okay. So let's play because possible. So I see. When that's what I said, most of the time, time. Stories. So, first, Jackson. So, without going to also, transition, position, so that's control, show, invest for future. फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस टाइम जो कि मैं फैमिली में थोड़ी सी और
So, currently I'm seeing people sure to go again. So I was playing with them, so, so, I'm going to play something like this. So, that's not I'm going to say one of so I like one as well. So, but this is kind of so, 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 Thanks, Russell. So that was also actually nice. Actually, apparently, this time the so, currently, I'm seeing so, sure. Again, so that was what I would so, I see. And goes when I said to them, so I said that I would go. That's what I like one is what I don't like. This is good. Sand. So, so, Thanks, Russell. Said I was watching it. Let's go about it. Then start the so, the last element of services. So, the process so, such as possible. Not possible. So, currently absent seeking so sure. So again, then let's play with our gospel. So, so, when gospel is up to that, so I said that I say one of the
So, welcome back, all of you. We're almost heading towards the end of WordCamp Bhopal 2023. And I've heard so much about the anticipation that people have here for the panel discussion for today. So the time has come. I formally invite the panel of Satish Kushwa, Damini Tripathi, Dhaira Gangwani. Unfortunately, one of our distinguished panel, Amit Mishra, couldn't join us due to an emergency at his end. I also invite the moderator for today's panel discussion, Kripesh Advani, who is one of our organizers of WordCamp Bhopal. When they are getting seated, I quickly introduce all of them to the attendees. So Satish Kushwa is a YouTube sensation with a 1.5 million subscribers on YouTube. Dhaira Gangwani is the founder of Dhaira The Project with a follower base of 92,000 followers on LinkedIn. There is a career coach, a content creator, a TEDx speaker, and more. Damini Tripathi is a digital marketer with a follower base of 2,61,000 on Instagram. With a follow base of 373K subscribers on YouTube, is into blogging and affiliate. Last but not the least, something about our moderator. Kripesh has very recently crossed the 150K subscriber base on YouTube. That's what we see in the panel discussion. I request all of you, please I request attendees to give a loud applause. Thank you. To everyone. Is it working? हाँ. Microphone. ये पास कर दो. कैसे चलता है हेलो हाँ. कृपेश भाई एंड कैसे हैं आप लोग एनर्जी नहीं है क्या ओके सो थैंक यू सतीश भाई आप आए यहाँ पर एंड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन सेलिब्रिटीज तो एक फैक्टर जो आपने नोटिस किया है जो आज के टाइम पे दैट इज मेकिंग देम सक्सेसफुल
वो क्यों सक्सेसफुल है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको लगता है कि दैट सेट्स देम अपार्ट? ऐसा कुछ एक कोई एक्स फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो उनके काम में डिसिप्लिन, ईमानदारी, जो आई थिंक किसी को भी कोई किसी भी फील्ड में है, ये तो जरूर होना चाहिए कि अपने काम को लेके ईमानदार हो, डिसिप्लिन हो और कंसिस्टेंसी के साथ में वो काम करे, ताकि वो किसी भी फील्ड में फोड़ सकता है। ऑसम, दैट्स अ रियली ग्रेट आंसर कि पहले आपको अपने काम के साथ में ऑनेस्ट होना पड़ेगा, राइट? एंड एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अब देख लिया है, आपने बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स को पढ़ लिया है ऑनलाइन इंडस्ट्री में, तो आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस लोग कर सकते हैं जिसमें सबसे कम कंपटीशन हो और पैसा भरपूर हो? ऐसा कुछ फील्ड मेरे को भी नहीं दिखता है, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर हम चाहें, जिस भी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है या फिर हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसका एक बेसिक सा सिंपल सा रूल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो ऑलरेडी टॉप पे है या फिर बिजनेस शुरू किया उसकी जर्नी में देखता हूँ उसने कैसे किया, क्या क्या स्ट्रेटजी इसने फॉलो करे, और फिर मैं देखता हूँ कि क्या जो मेरे पास जो स्किल है या फिर अगर मैं कुछ दो चार स्किल और सीख लूं और इसके जैसा मैं कर पाऊंगा, मुझे अगर ऐसा फील होता है तो मैं उस काम को करना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें करी है, चाहे वो शुरुआत मैंने ब्लॉगिंग से करी थी, और ब्लॉगिंग से करते करते फिर मैंने यूट्यूब किया, यूट्यूब में भी मैंने यही सिस्टम फॉलो किया, एंड इसी तरीके से जो भी चीजें हैं आप लोग के सामने हैं, तो इस तरीके से मैं करता हूँ। ऑसम, ऑसम, ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विद आवर लिंक्डइन एक्सपर्ट धैर्या। सो वी हैव हर्ड कि लिंक्डइन में जो हमारी लीड होती है, लीड क्वालिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है कि अगर आपके 1000 फॉलोवर्स भी आए तो भी वो आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। तो इज दैट ट्रू, और है तो कितने एक्सटेंट तक है? ठीक है, सबसे पहले तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इधर हैं ही, आई एम अज्यूमिंग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु रन देयर ओन बिजनेसेस, डिजिटल मार्केटर्स आर देयर, एंड देयर आर सर्टेन कंपनीज आल्सो हैव कम अप रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आप में से कितने लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हो? रेज योर हैंड्स, एक बार देखते। अच्छा है। तो अब आपके हिसाब से एक्टिव होने का मतलब ये है कि प्रोफाइल है, या आप एक्चुअल में लिंक्डइन पे इंटरैक्ट करते हो ऑडियंसेस के साथ, या यू आर एबल टू जनरेट सम रेवेन्यू फॉर योरसेल्फ? एक्टिव जब मैंने आपसे पूछा तो आपने किस बेसिस पे बोला आप एक्टिव हो? लाइक सब यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, या सिर्फ प्रोफाइल है? यूज कर रहे हो, ग्रेट। सी, सो कमिंग टू कृपेशियस क्वेश्चन, जब ये बोला जाता है कि द लीड क्वालिटी इज वेरी हाई, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज, लिंक्डइन पे ना मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू कैन यूज एंड यूज इट टू योर लेवरेज टुडे। सब में बहुत पोटेंशियल है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो। मुझे लिंक्डइन पे सिर्फ एक एडवांटेज दिखती है एज अपोज टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि द ऑडियंस जस्ट बाय डिफॉल्ट इज मोर सीरियस एंड मोर वाइज इन जनरल, नॉट डिमीनिंग। मैं दूसरी प्लेटफॉर्म के ऑडियंस को नीचे दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है, ये नहीं बोल रही हूँ उनको वो चीजें समझ नहीं आती, बट बिकॉज बाय डिफॉल्ट पूरी कॉर्पोरेट ऑडियंस, फाउंडर्स, स्टार्टअप ओनर्स, एंड अब सुनील शेट्टी, युवराज सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सबके अकाउंट है लिंक्डइन पे, दे ऑल पोस्ट एक्टिवली। तो कुछ तो रीजन होगा। तो इंटेंट जो लोगों का है ना, वो लिंक्डइन पे इज नॉट टू गेट इंटरटेन्ड। इंटेंट ऑन लिंक्डइन इज टू गेन नॉलेज and connect with highly, you know, I would say influential people who can help you in your career. उसकी वजह से जो लीड क्वालिटी आती है वो सीरियस हो जाती है, और उसकी वजह से ज्यादा बिजनेस जल्दी बन जाता है। अगर आपको 50 लीड्स भी आ रही हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस फॉर योर बिजनेस कि उनमें से मिनिमम 25 कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे 95% ऑफ माई बिजनेस रेवेन्यू एंड कंटेंट क्रिएशन रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लिंक्डइन, राइट? एंड वो इसलिए होता है जस्ट बिकॉज द ऑडियंस इज वेरी सीरियस। तो इंटेंट की बात है। That is how I'd like to answer it. Yeah. Nice, nice, nice. And next question we have with our Instagram expert. So, ma'am, I have seen your content. It's one of the best in education, especially the way you produce it. I really admire that. And मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एजुकेशनल नीश में हैं, उसमें इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाना एंड देन वहाँ पे ऑडियंस गेन करना इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। तो वो आप एंगेजमेंट कैसे रखते हो, स्पेशली फॉर एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन? See, actually, I have started posting on Instagram 6 to 7 months back. And what happened is, if you are trying to go on Instagram and if you want to post educational content, it doesn't mean that your educational needs to be fully informative, right? Instagram पे लोग इसलिए जाते हैं because they need some form of entertainment or the other.
सो व्हाट यू कैन डू, मतलब व्हाट आई पर्सनली डू, व्हाट आई डू इज मैं ऐसा कंटेंट क्यूरेट करती हूँ दैट इज एंटरटेनमेंट एज वेल बट इट गिव्स इंफॉर्मेशन एज वेल। एंड व्हाट आई हैव आल्सो सीन, अगर मैं अपने लास्ट वीडियो में इफ आई कमेंट, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ, मैं डीएम में रिप्लाई कर रही हूँ एंड आई एम सॉल्विंग माय ऑडियंसेस प्रॉब्लम्स, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपने आप करंट बूस्ट आ जाता है। तो दैट इज हाउ वुड आई वुड एक्चुअली लाइक टू आंसर। अगर आप इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल कंटेंट बनाने जा रहे हैं तो यू ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें प्रॉपर एंटरटेनमेंट भी रहे एंड यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन इन अ मच बेटर वे। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन लगा के बस इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने लग जाओगे तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप ऑडियंस को लंबे समय तक रख पाओगे। सो इट्स बेटर दैट यू ब्रिंग अ लिटिल एंटरटेनमेंट टू इट। राइट, इंफोटेनमेंट कंटेंट बेसिकली बनाना। नाउ आई हैव वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर अभी सबका भी रहेगा कि पैसे कैसे कमाएं फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम लिंक्डइन एंड फ्रॉम यूट्यूब। लेट्स स्टार्ट विथ यू। Okay. See, Instagram पे one of the most popular ways to earn through sponsorships and deals. लेकिन हम सबको पता है अगर कोई Instagram पे कंटेंट क्रिएटर है, स्पॉन्सरशिप से घर चलता नहीं है। यू हैव टू हैव समथिंग एल्स जिससे आप एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सको, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू माई सेल्फ एज वेल, प्रोड्यूस अ डिजिटल प्रोडक्ट। सपोज करिए आप फाइनेंस की निच में हो या फिर यू आर ट्राइंग टू गो इन टू लॉ निच, तो व्हाट यू कैन डू, यू प्रोड्यूस अ डिजिटल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ई बुक्स हो गई या फिर कोर्सेज हो गए, वेबिनार्स हो गए, सेशंस हो गए। सो यू हैव अ क्लियर फ्यूचर कि अगर मैं स्पॉन्सरशिप्स मुझे 1 महीने नहीं आती है बट मैं अपना डिजिटल प्रोडक्ट हमेशा सेल कर सकता हूँ। सो डिजिटल प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर हो तो। प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। Okay, I'll answer it for LinkedIn. I think LinkedIn पे majorly obviously बहुत लोगों को लगता है कि probably brand sponsorships या brands नहीं होते and you can't really earn through brand deals. But a lot of people don't know that all the brands जिनके बारे में आप सोच सकते हो on YouTube और Instagram are now coming to LinkedIn. मैंने वो 3 साल की जर्नी देखी है when I started in September 2020 जब ब्रांड्स को समझ में ही नहीं आता था यार लिंक्डइन क्या है और हम इधर पैसे डालेंगे तो डूब जाएंगे। दैट वाज देयर ओनली माइंडसेट टू एक्चुअली बिलीविंग इन द एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स ऑन लिंक्डइन and putting in the money here as well. I've seen that journey in the past 1 year. That bump has come. So brands are definitely there on LinkedIn, but there is a certain category of brands, right? हर brand नहीं आएगा LinkedIn पे because they are also just adapting to what the platform is. इधर obviously जो एक campaign की ROI metric से बहुत अलग होती है as compared to YouTube and Instagram, तो उनको भी देखना पड़ता है. But there are brands. That's one way, the basic way. दूसरा तरीका ये है जो बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि आप इतने स्पीकिंग गिग्स करते हो, यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टॉक्स, हाउ इज दैट हैपेंड? दैट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ लिंक्डइन. For me, I don't have any agency that manages me exclusively. I don't have any talent manager. कोई नहीं है जो आके मुझे ये लीड्स देता है. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो भी मुझे आया है, जितने भी टॉक्स मैंने आज तक दिए हैं, वो सब ऑर्गेनिकली बिकॉज ऑफ लिंक्डइन आए हैं. Only because of LinkedIn. So public speaking and keynotes, speeches that you give. And if you want to become a speaker or a trainer, या आप coach या consultant बनना चाहते हो on the side or you have it already, speaking के through भी LinkedIn is a great platform to monetize on that skill. College training programs, corporate training programs जो मैं करती हूँ, all of that. The third way that I'd like to state is, जैसे दामिनी ने बोला, obviously अगर आपके खुद के कोई भी digital products हैं, could be like an ebook, could be a a cheat sheet, आपका खुद का कोई कोर्स हो सकता है, आप अफिलिएट लिंक्स के थ्रू भी लिंक्डइन से कमा सकते हो आप, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू इट. बट वुड आई एडवाइज दैट जितना मैंने देखा है इतना बेनिफिशियल नहीं होता है ऑन लिंक्डइन as much as it is on YouTube or Instagram. And one last unconventional way that I'd like to state is जिससे आप पैसे कमा सकते हो on LinkedIn, जो अभी मैंने बहुत रिसेंटली देखा है, अगर आप कुछ ऐसे ब्रांड्स को अप्रोच करो जो एक कोर नीश में और आप उस कोर नीश में कंटेंट बना रहे हो और आप उनके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट बना सकते हो टू ग्रो देयर लिंक्डइन पेज, या आप उनके साथ लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स करोगे एंड यू विल बिकम अ गेस्ट. जैसे मैंने एक पिच किया एक ब्रांड को एंड आई डिड अ एंटायर LinkedIn audio event series with them of 5 episodes sponsored by them, and because audio events नया feature है on LinkedIn, so the algorithm is boosting it. उनको audience मिल गई, मेरा traction मिल गया, and I got the sponsorship for them, and दोनों को mutually beneficial situation हुई वो. So that's a very unconventional but a nice way which I've recently discovered. नाइस नाइस। ओके, सो यहाँ पे कितने लोगों के पास खुद का प्रोडक्ट है? कोई किसी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है खुद का? SaaS, डिजिटल plugins. डिजिटल भी हो सकता है।
सो बेसिकली यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबको साइड कर दो। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कोई मोनेटाइजेशन का कोई वो नहीं है, सोर्स नहीं है, ना ही लिंक्डइन पे है। लाइक आप ब्रांड्स के थ्रू ही कर सकते हो या फिर खुद का प्रोडक्ट सेल करके कर सकते हो। बट यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए लगता है कि यहाँ पर आपको पता होगा गूगल एडसेंस से हम मोनेटाइज कर सकते हैं अपने कंटेंट को। तो इनिशियली आपको एडसेंस से सपोर्ट मिल जाता है जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो। एक बेसिक क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर और कुछ आपको 4000 या 3000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आप गूगल एडसेंस से हर महीने पेमेंट लेना शुरू कर देते हो। और जैसे ही आपका चैनल जब ग्रो होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे भी आपको इनिशियली ब्रांड डील्स नहीं आएंगे, ना ही लिंक्डइन पे नहीं आएंगे, बट यूट्यूब पे जब आप शुरू में लाइक एडसेंस से बना रहे हो, फिर धीरे धीरे जब आपका बन जाता है अकाउंट अच्छा खासा, तो ब्रांड डील्स होते हैं। उसके साथ साथ जितने लोगों ने भी हाथ खड़े किए थे कि भाई मेरा खुद का प्रोडक्ट है, तो आप खुद के प्रोडक्ट को आप पिच कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ में। कोशिश ये रखो कि जो कंटेंट आप यूट्यूब पे बनाओगे तो आपके प्रोडक्ट के साथ में वो ब्लेंड करना चाहिए या फिर उसके साथ मैच करना चाहिए, तभी जाके आपके प्रोडक्ट पे सेल आएगा। इसके अलावा अफिलिएट कर सकते हो काफी तगड़े से, इवन आप अफिलिएट इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। बट सबसे जो अच्छा सेल आता है यूट्यूब पे आता है, बिकॉज यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लगा सकते हो। और कभी लिंक लगाने के लिए यूट्यूब मना नहीं करता, कभी आपको स्पैम में नहीं डालेगा, कभी आपको पेनलाइज नहीं करेगा कि आपने बहुत सारे लिंक्स लगा रखे हैं। हालांकि शॉर्ट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। लास्ट मंथ यूट्यूब ने एक अपडेट दिया कि आप शॉर्ट्स में लिंक नहीं लगा सकते, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक काम नहीं करेगा, और जो कमेंट में पिन करते हैं हम लिंक, वो काम नहीं करेगा। बट शॉर्ट्स के थ्रू हम इंप्रेशंस ले सकते हैं और शॉर्ट्स के थ्रू बता सकते हैं कि हमने कोई लॉन्ग वीडियो बनाया है, वहां पे हम उनको ऑडियंस को भेज सकते हैं। तो बेसिकली यूट्यूब पे मल्टीपल सोर्सेज है पैसे बनाने के। इवन मैंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे, कितने लोगों को मेरे चैनल का नाम पता है? ओके, सो मेरे चैनल का नाम है सतीश के वीडियोस। मेरा नाम है सतीश और के फॉर कुशवाहा एंड वीडियोस। सो यहाँ पर एक वीडियो मैंने बनाया था कि 18 वेज टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब। सो एज ए क्रिएटर आप 18 तरीकों से पैसे बना सकते हो, और वो 18 तरीकों को मैंने खुद ट्राई किया है और वहां से पैसे भी बनाए हैं और मैंने दिखाया भी है। अगर कुछ मैं 6-7 ऐसे गिन दूं, तो सबसे पहला गूगल एडसेंस है, ब्रांड्स है, अफिलिएट है, और इसके अलावा आप खुद का अगर प्रोडक्ट बना लेते हो तो सबसे अच्छी बात हो जाती है। इवन हम खुद का प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं और जल्दी हम लॉन्च करेंगे उसको। इसके अलावा मर्चेंडाइज आप बना सकते हो। मैंने अभी अपने ही एक टैगलाइन मचाते रहो के नाम से मर्चेंडाइज भी बनाया था, तो उसमें क्वालिटी इश्यूज होने की वजह से मैंने उसको थोड़ा सा पॉज पे कर दिया है, अभी रोक दिया है। बट फर्स्ट मंथ हमने अच्छा खासा सेल किया था, तो एक ये भी अच्छा खासा सोर्स है। मिस्टर विस करके एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मर्चेंडाइज उन्होंने शुरू किया था खुद, फिर उन्होंने अपना एक खुद का ब्रांड बनाया एंड काफी अच्छा कर रहे हैं। इवन यूट्यूब पे आप अपना शॉपिफाई स्टोर लगा सकते हो, तो उससे आप अपने प्रोडक्ट्स इजीली पिच कर पाओगे। आपके वीडियोस के नीचे ही दिख जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स। तो यूट्यूब एक पूरा इकोसिस्टम लेके आ रहा है। तो जितने भी लोग या तो खुद का प्रोडक्ट है, नहीं भी है, तो आप यूट्यूब अगर करते हो तो पैसे कमाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मैं देखो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब के बहुत सारे फायदे हैं। एंड यूट्यूब पे अगर पॉपुलर हो जाते हो तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ऑटोमेटिक बन जाता है। वहां पे इतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा बहुत कंटेंट डालोगे तो वहां भी ग्रो हो जाएगा। थैंक यू। ऑसम ऑसम। नाउ अगर मैं इसको सम अप करूं तो हमने एक चीज सीखी है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर डाउन द लाइन प्रोडक्ट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो। एंड सेकंड, हैविंग दैट गुड रिलेशनशिप विद ब्रांड्स विल हेल्प यू सस्टेन इन अ लॉन्गर टर्म। नाउ एक अगेन मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है फॉर ऑल द थ्री पैनलिस्ट हियर कि यू ऑल ऑफ यू हैव सम गुड ऑडियंस, बट देर आर फ्यू पीपल जो आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, और कभी कभार हमारा ध्यान ऐसा रहता है कि वो एक ही कमेंट पे जाता है भले 10 कमेंट हमारे अच्छे हों। तो वो क्वेश्चन बहुत सारे बिगनर्स के माइंड में भी रहता है कि हम जब जाते हैं तो यार क्रिटिसाइज करते हैं लोग हमारे लुक्स पे या फिर द वे वी स्पीक या जो भी हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, तो उस क्रिटिसिज्म से कैसे आप लोग डील करते हैं? सो बेसिकली हमने इसके लिए अलग से अपनी एक टीम बना रखी है जो ऐसे कमेंट जो करते हैं उनको ढूंढते हैं और फिर पोपचे पे ले जाके उनको धोते हैं। मैं सोचता हूँ ऐसे लोग अगर मिल जाए तो थोड़ा सा मैं भी अपनी भड़ास निकाल लेता। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को आपके हर चीज से प्रॉब्लम है। लाइक अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया, सब चीज बनाया, कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे आपके पूरे स्क्रीन में, पूरे फ्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिसके लिए वो आपको लाइक नीचा दिखाएं।
वो लोग खाली बैठे रहते हैं, उनको मजा आता है ये सब करने में। तो कुछ हद तक आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर देखो आपका कंटेंट ही वैसा है जहाँ पे हेट मिलने के चांसेस ज्यादा है, लाइक आपने किसी को बुरा भला कह दिया, फिर किसी को रोस्ट कर दिया, या कुछ ऐसा जो सामने जो व्यूवर है उसको बुरा लग गया, तो ऐसे में अगर वो आपको हेट दे रहा है तो ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट करिए। बट अगर यूजुअली ऐसा कुछ भी किसी भी बात पे आ रहा है तो उसको आप इग्नोर करना सीखो। आप देखोगे अगर कोई भी पॉपुलर वीडियो उठा के देख लो, आपको टॉप पे कुछ ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे जो बहुत ही वाहियात होंगे। किसी का भी कंटेंट उठा के देख लो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर का भी आप पोस्ट उठा के देखोगे उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इनिशियली बुरा लगता था, बट अभी ऐसा लगता है कि ठीक है, ये लोग इन लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म आता है जो लगता है कि यार इस बंदे ने सही बात कही है, मेरे ही तरफ कमी थी, तो उसको हम दूर करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको मेंटेन करें, आगे अगली वीडियो में उसको सही करें। तो मैं ऐसे करता हूँ। नाइस। मेरी तो सतीश सर जितनी टीम तो नहीं है जो सिर्फ comments को handle करे। कोई इतने तो कमेंट नहीं आते, बट आई थिंक मतलब मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सनल नेचर और जिस तरीके की आपके सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन रही है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, आई थिंक मैं बचपन से ही ऐसी थी कि मुझे ज्यादा दूसरे के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता था, एंड ऑनेस्टली एंड दैट हेल्प्स, इट हेल्प्स राइट। मुझे नहीं पता था आई बी इन दिस करियर, बट इन जनरल दूसरे जो भी, नॉट दैट मैं दूसरों की सुनती नहीं हूँ या मैं क्रिटिसिज्म नहीं लेती, आई एम समबडी हु विल वेरी वेरी ओपनली टेक क्रिटिसिज्म। बल्कि मैं लोगों को बोलती हूँ आप मुझे मुंह पे बोलिए अगर कुछ भी अच्छा है बुरा है, बट आई एम वेरी सिलेक्टिव विद मैं किन की बातें सुनना चाहती हूँ और किन की नहीं। वो क्लैरिटी मेरे दिमाग में है, हु डू आई वांट टू लिसन टू एंड हु डू आई नॉट वांट टू। सो इट्स वेरी इजी फॉर मी नेचुरली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, टू नॉट लुक ओनली। मैं देखती ही नहीं और मुझे फर्क पड़ता भी नहीं अगर मैं देखती हूँ। सो आई डेंट हैव टू डेवलप अ थिक स्किन। मैं कल किसी से बात ही करी थी इसके बारे में कि आई वॉज बोर्न विद अ थिक स्किन, सो फॉर मी इट्स दैट। मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसे ही देखा है कि शुरुआत के जब आपके 10-20 हजार फॉलोअर्स रहते हैं ना, और तब अगर कोई हेट कमेंट आता है, आई थिंक यू शुड टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ। क्योंकि मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं स्टार्टिंग में वीडियोस में तुम करके बात करती थी। मेरे लास्ट के 10 वीडियोस में लोगों ने बोला आपको बड़े लोगों की इज्जत नहीं है, आप तुम क्यों बोलती हो। देन आई स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट, और मैं जब आप करने बोलने मतलब जब मैं आप करके बोलने लगी, दोस कमेंट्स वर गॉन डाउन। इसके अलावा व्हाट आई हैव सीन, अगर आप आगे बढ़ गए हो तो दिन के 20 कमेंट्स से वो दिन के 100 कमेंट्स हो जाएंगे, तो आप 100 पढ़ भी नहीं पाओगे और वो क्रिटिसिज्म दूर का दूर ही रह जाएगा। डाउन द लाइन हमें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, कि हर कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में एक ऐसा पॉइंट रहता है कि एकदम से उसकी ग्रोथ हो जाती है। एक दैट वन पीस ऑफ कंटेंट, व्हाट वाज दैट वन पीस ऑफ कंटेंट फॉर यू, कि वो कंटेंट के बाद एकदम से यू हैव सीन द बूस्ट? इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील क्रिएट की थी, एक टूल था, उसका नाम leadinforce.com है। वो बेसिकली ब्रांड्स का डेटा गैदर करता है। इट एक्चुअली गॉट, शुरुआत में उस पर रीच नहीं आई थी, बट ओवर द टाइम इट गॉट आई थिंक अराउंड 10 मिलियन व्यूज एंड इट गेव मी अबाउट 160K फॉलोअर्स। वाह, दैट्स फ्रॉम वन सिंगल रील। और ये वन सिंगल रील आपकी कितने टाइम में आई थी ये? लाइक मतलब कितना टाइम पीरियड आपको लगा था ये? 10 मिलियन क्रॉस करने में। हाँ हाँ, Okay, it took about 1 month. वन। And in 1 month, I actually went from 10K followers to 250K with that single video only. वाह। सो लिंक्डइन पे वायरलिटी होती है, बट इंस्टाग्राम जैसी वायरलिटी नहीं होती है। मतलब देयर इज नो वन पीस ऑफ कंटेंट वेयर यू कैन गो फ्रॉम 10K to 250K, दैट्स नॉट पॉसिबल। लाइक जस्ट टेलिंग द ट्रूथ, कोई भी नहीं कर सकता। बट लिंक्डइन पे आई थिंक एक पॉइंट आया था जहां पे मैं आई वाज वन ऑफ द क्रिएटर्स जो उस टाइम पे वीडियोस बना रहे थे ऑन लिंक्डइन जब कोई वीडियो नहीं बनाता था। सो इन वही 2020 में कोई वीडियोस नहीं डालता था लिंक्डइन पे। सब बोलते थे तू पागल है, वीडियोस डालती है लिंक्डइन पे, कौन देखेगा। पर मैं तो डालती थी वीडियोस बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोस। तो और वीडियोस पे रीच आना लिंक्डइन पे आज भी बहुत डिफिकल्ट है। बट मेरी एक वीडियो थी, मुझे याद है, जहां पे मैंने बात की थी अबाउट हाउ आई डिड नॉट क्रैक एन इंटरव्यू ऑफ माई ड्रीम कंपनी। तो मुझे सिस्को में ना, फ्रॉम ऑलमोस्ट द टाइम आई एंटर्ड कॉलेज आई वांटेड टू गेट प्लेस्ड इन सिस्को। मतलब दिमाग में था सिस्को सिस्को सिस्को, मैंने इसी इंजीनियर, एंड आई डेंट गेट इन टू सिस्को। वन फाइन डे नहीं हुआ सिलेक्शन।
So 4 months after graduation मैंने ये post की थी. That's when I got active on LinkedIn and how I did not get selected in my dream company, my learnings और एक video थी. ऐसे ही बस फोन उठा लिया था मेरे नानी के घर पे. No aesthetic background, फटे हुए पर्दे, no lighting, कुछ नहीं, ऐसे ही. And that video had gone viral in a sense on LinkedIn, जो थोड़ी बहुत virality मिलती है. And तब मैंने एक sudden spike in followers देखा था. तब मुझे पता चला था कि इस rate पे भी follower growth होती है on LinkedIn. So that video had worked for me. सो जब मैंने यूट्यूब अपना शुरू किया था तो सबसे पहले मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता था। तो उस टाइम पे मैंने एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वीडियो किया था जिसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा रोस्ट किया था एंड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वहां से गालियां बहुत पड़ रही थी। तो उस वीडियो से फायदा तो नहीं हुआ बट व्यूज काफी आ गए थे, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिले थे। बट उसके बाद मैंने एक और वीडियो पोस्ट करी थी, तभी जियो लॉन्च हुआ था। मैंने बनाया था जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस वोडाफोन एंड वो वीडियो काफी वायरल हो गया था। लाइक कुछ 10 10 के अंदर मिलियंस में व्यूज आ गए थे। एंड जब भी मैं कहीं अगर रोड पे होता था या फिर कहीं पे लोग मेरे को देखते थे मेट्रो में या फिर ट्रेन में, तो आपकी एक वीडियो देखी है जियो वर्सेस एयरटेल वाली, तो मेरे को लगा था ये वीडियो लाइक हर किसी ने देखी होगी। इवन उस टाइम पे इंटरनेट इतना अभी नहीं था, अभी जियो ने जस्ट लॉन्च किया था। तो जो लोग पहले से यूट्यूब देखते थे वो लोग फेस वैल्यू बहुत जल्दी बन जाता था। अगर आपके मिलियन सब्सक्राइबर है मतलब आप तो सेलिब्रिटी हो। अभी तो 10 मिलियन तक आप करोगे तब जाके थोड़े से पॉपुलर हो गए। एंड फिर उसके बाद मैंने चैनल का जब निश चेंज किया, लाइक मैंने दूसरा चैनल शुरू किया जहाँ पे इंटरव्यूज और करियर से रिलेटेड ऑनलाइन मेक मनी ऑनलाइन बनाना शुरू किया। तो इसमें मेरा एक इंटरव्यू वीडियो था जो मुंबई के ही एक क्रिएटर थे, सुपर इंडियन ब्लॉग्स नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था कि लाइक वो रिच कैसे बने। तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई थी कि कैसे वो बिहार से मुंबई आए थे एंड फिर चीजें शुरू करी थी। तो वो वीडियो काफी वायरल हुआ था एंड उसके बाद से मेरे सारे वीडियोस जो भी मैं इंटरव्यूज करते गया सारे वीडियोस हिट गए थे। तो ये तो कितने टाइम बाद हुआ था आपका? भाई ये ऑलमोस्ट मेरे यूट्यूब शुरू करने के 2 साल के बाद हुआ था। 2 साल के बाद आपको ये पुश लाइक ये पुश जो मिला था ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। हाँ 2 साल तक आप कंसिस्टेंट थे। करना पड़ रहा था, वैसे मजा आ रहा था मजा सच आया। बोलूं तो। और अगर आप यूट्यूब या फिर कोई भी चीज शुरू कर रहे हो ये सोच के कि अचानक से आपको पुश मिल जाएगा, तो ये मत सोचो। आप डेली के जो छोटा छोटा ग्रोथ है ना उसको आप देखो, उसको उससे आप खुश हो। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की आप कोशिश करो, मजा आएगा। डेली आप ग्राफ देखो, डेली आप देखो कि कल को मैं भी 0 मेरे सब्सक्राइबर्स थे, तो वो चीज देख के मैं खुद से ही इंस्पायर होता हूँ कि यार मैं कभी 0 पे था आज यहाँ पे हूँ। तो अपने आप से कंपेयर करता हूँ, बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। नाइस नाइस नाइस। तो मेरा क्वेश्चन पूछने का मेन मोटिव यही था कि एज अ कंटेंट क्रिएटर लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कंटेंट क्रिएट करें एंड हमें एकदम से बूस्ट मिल जाए, बट रियलिटी वो नहीं है, ना इनके लिए ना उनके लिए ना सतीश के लिए। रियलिटी ये है कि 2 साल उन्होंने कंसिस्टेंटली मेहनत करी, एक बीच में छोटा सा पुश मिला एंड देन फिर से वो थोड़ा सा डाउन पीरियड आया एंड देन फिर 2 साल के बाद उनको वो पुश मिलना स्टार्ट हो गया। तो यू नीड टू हैव दैट कंसिस्टेंट एफर्ट्स विच इज ट्रू फॉर ऑल द क्रिएटर्स आई थिंक। यस। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कंटेंट क्रिएशन में, जब भी लोग स्टार्ट करते हैं मेनली दैट दे फॉल इन परफेक्शन ट्रैप। जब तक मेरा स्टूडियो नहीं होगा मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा, माइक अच्छा नहीं होगा, कैमरा अच्छा नहीं होगा, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं होगी। तो उस परफेक्शन ट्रैप से कैसे बचा जाए, कैसे स्टार्ट करूं? लग रहा है लोग बोर हो रहे हैं पीछे। वैसे पढ़ाई लिखाई वाली चीजों से लोग बोर हो जाते हैं, बट ये पैसे कमाने की बात हो रही है गाइस। या फिर आप लोगों के पास बहुत पैसा है, तो अगर जो ज्यादा पैसे बना रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, हमारे चैनल पे फीचर हो सकते हैं। सिर्फ बताना है कि आप कैसे पैसे कमा रहे हो। कितने लोग इंटरेस्टेड है मेरे चैनल पे आने के लिए? ओके, तो पैसे कमाने पड़ेंगे और दिखाने भी पड़ेंगे। सो भाई आप कितने लोग इंटरेस्टेड है? बहुत बढ़िया, मैं आपसे अभी कांटेक्ट करता हूँ। सो यार परफेक्शन वाली चीज देखो, मैंने जब शुरू किया था तो एक छोटे से मुंबई के एक चौल से शुरू किया था। मेरे चौल का एक छोटा सा रूम था, अराउंड 10 बाई 12 का होगा एंड वहां पे ऑलरेडी 6 लोग रहते थे। तो उसी में एक वॉल पे हमने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी थी, फैन भी ऑफ करके चलना पड़ता था कि बट गर्मी होती थी, बगल में टॉवल होता था। एक डायलॉग बोलने के बाद फिर पसीना पोंछते थे और फिर डायलॉग बोलते थे। वहां से चीजें शुरू करी। अभी खुद का स्टूडियो है अलग अलग जगह पे, लाइक दिल्ली में है, मुंबई में है, फिर अभी होम टाउन में भी बना लिया है एंड लखनऊ में बना लिया है। तो परफेक्शन ढूंढने जाएंगे तो हम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं ना कि बेस्ट टाइम है शुरू करने का अभी। तो
शुरू कर दो अभी। शुरू कर दो। और मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी फील्ड में है उसको कंटेंट बनाना चाहिए। आप किसी और को पैसे दोगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इससे अच्छा है कि आप खुद के ही प्लेटफॉर्म से, लाइक खुद के ही चैनल से आप उसको प्रमोट करो। पैसे बचेंगे और सेल्स भी अच्छी आएगी। डायरेक्ट मैंने जब स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया वो वीडियो, मैं मेरी नानी का जो 30 साल पुराना घर है उधर, पपड़ियां निकल रही हैं, छत गिरने वाली है उस घर की। उस घर में मैंने शुरुआत की थी। मुझे तो बस यही डर होता था मेरे सर पे ना गिरे बस छत, वीडियो बनाते हुए, क्वाइट लिटरली नो। बट ऑनेस्टली तब मैं ज्यादा सोचती नहीं थी, क्योंकि मतलब वही है, अब तो सब बोलते हैं कि आईफोन होना चाहिए या कोई स्टूडियो होना चाहिए, ये वो। मुझे भी एक पॉइंट के बाद बहुत लोगों ने बोला, एंड मैंने भी अपने एक मेंटर के बोलने के बाद ही 1.5 साल आफ्टर मैं कंटेंट क्रिएशन जर्नी अपग्रेड किया। आपको अपग्रेड करके यू हैव टू गेट बेटर एट इट एवरी डे, वो माइंडसेट भी होना चाहिए। एक दिन करना है, बट वो डे वन से करना है नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। मेरा कैमरा बहुत ही बेसिक सैमसंग फोन था, जिसका कैमरा ऑनेस्टली बहुत गंदा था, अच्छा नहीं था। आई सेड पर्दे फटे हुए थे। ऐसा भी नहीं था, मैं बहुत वेल ग्रूम्ड होके वीडियोस बनाती थी पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे तब ये समझ में आ गया था दैट लोगों को अगर आप कुछ दमदार बता रहे हो, जिसमें दम है, जिससे उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ सकता है और वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सुनेंगे। भले ही फिर आप इधर एक शैंडलियर के नीचे खड़े होके कुछ वैल्यूबल नहीं बोल रहे, कोई नहीं सुने। दैट इज व्हाट आई थिंक। सो जस्ट स्टार्ट लाइक सतीश सेड, बिकॉज आगे जाके तो इम्प्रोवाइज करना ही है। आज अब अगर मैं, मेरा एक प्रॉपर सेटअप घर पे भी है, अब वही प्लान है कि अब स्टूडियो भी चाहिए। अब स्टूडियो के आगे, अब जैसे सतीश ने बोला, अलग सिटीज में भी कर लेंगे। बट कंटेंट जब तक वैल्यूबल नहीं होगा, लोग नहीं देखेंगे आई थिंक आपका कंटेंट। राइट। आई थिंक दोनों ने सब कुछ कवर ही कर दिया है। मतलब मैंने भी स्टार्ट किया था जस्ट विद अ ग्रीन स्क्रीन एंड अ फोन, और एक रिंग लाइट होती थी। और अभी रिसेंटली, मतलब अभी तक मैंने अपना स्टूडियो भी नहीं बदला है, सो आई एम डिसाइडिंग टू इम्प्रूव माय स्टूडियो एंड एवरीथिंग। बट अभी मतलब मेरा भी ऐसे ही है कि मैं ग्रीन स्क्रीन में काम करती हूँ। और इसके अलावा मतलब परफेक्ट स्टूडियो होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी एक सेशन भी हुआ था एआई टूल्स के ऊपर, तो यू माइट हैव सीन कि आप 1 सेकेंड में बैकड्रॉप्स बदल सकते हो। तो व्हाई डू यू नीड अ स्टूडियो? यू कैन जस्ट डू इट विद एआई। और इसके अलावा यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, एज आई सेड। नाइस नाइस। सॉरी। अगेन आई थिंक यहाँ पर एक जो क्रक्स है वो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डाउन द लाइन यू विल हैव एवरीथिंग। यू विल हैव द स्टूडियो, यू विल हैव द बेस्ट कैमराज, यू विल हैव द बेस्ट माइक्रोफोन्स। बट स्टार्ट में आपको वो थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि जो भी है उससे स्टार्ट कर लो। डजेंट मैटर आप कहाँ हो, क्वालिटी कंटेंट दो, एंड डाउन द लाइन यू विल हैव एवरीथिंग। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित से। अमित नहीं आए। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अमित हियर ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, बट उनकी तरफ से एक काफी स्वीट एंड शॉर्ट मैसेज है, तो आई वुड लाइक टू प्ले दैट मैसेज बिफोर वी फर्दर प्रोसीड विद द पैनल डिस्कशन। ये है हमारे अमित मिश्रा जी।
सो अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं है, बट वी स्टिल हैव सम ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स। एंड इनसे मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा बिफोर आई लीव देम। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं कंटिन्यू करते रहूं, अच्छी काफी मुझे मुझे तो काफी अच्छी नॉलेज मिल रही है, लेकिन क्योंकि बिकॉज वी आर हैविंग सम टाइम कॉन्स्टेंट, तो एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा सभी सभी से अगेन, कि अगर आज आपको 2023 में स्टार्ट करना हो फ्रॉम जीरो विथ मिनिमम रिसोर्सेज, तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप? मैंने एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट ही 2023 में किया है। सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू आंसर दिस फ्रॉम जीरो फ्रॉम अगेन? जीरो। एक्चुअली मैंने जैसे स्टार्ट किया है फ्रॉम द डे वन, आई हैव मेंटेन्ड अ गुड क्वालिटी फॉर द वीडियोस। मतलब आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे और लास्ट देखेंगे तो आई थिंक यू विल सी अ डिफरेंस ओनली इन द एडिटिंग स्टाइल एंड द वे आई स्पीक, but the concept and everything was exactly the same it was before 6 months ago. Yeah. अगर मैं स्टार्ट करती वापस 2023 में विद जीरो फॉलोअर्स और नो ऑडियंस टू केटर टू, आई थिंक मैं यही एडवाइस देती कि भले ही शायद मैं लिंक्डइन से स्टार्ट ना करती, बट आई वुड एडवाइस आप किसी एक प्लेटफॉर्म को पहले पकड़ो, एक स्ट्रॉन्ग बेस उधर बना लो। स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन किसी के लिए 50,000, किसी के लिए 1 लाख फॉलोअर, किसी के लिए 1 मिलियन हो सकती है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। एक स्ट्रॉन्ग बेस जब आपका बन जाता है, जब आपको लगती है कम्युनिटी बिल्ड हो रही है बियॉन्ड जस्ट एन ऑडियंस हु व्यूज योर कंटेंट, देन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके एक डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली डू। बिकॉज आई थिंक अगर आप 3 प्लेटफॉर्म्स पे 4 प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ कंटेंट बनाने की कोशिश करोगे, इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है ना। तो इन 2023 यू कैन बी कंफ्यूज कि इंस्टाग्राम पे भी कर लूं, लिंक्डइन पे भी कर लूं, यूट्यूब भी कर लूं, एक्स पे भी कर लूं। तो आई वुड जस्ट एडवाइस एक पे पहले बेस बना लेना, देन मूव ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स एंड डाइवर्सिफाई। ग्रेट पॉइंट धैर्य। सो मैं शुरू करूंगा तो कंटेंट क्रिएशन ही शुरू करूंगा। एंड मेरे पास समझो पैसे भी नहीं है, लाइक कैमरा भी नहीं है, आइडियाज भी नहीं है, तो मैं सिंपली अपने मोबाइल फोन के ही कैमरे से शुरू करूंगा कंटेंट बनाना। और कंटेंट बनाने में थोड़ी सी स्ट्रेटजी रखूंगा आज के टाइम को देखते हुए। मैं ऑलमोस्ट 50% ऐसे कंटेंट बनाऊंगा जो ट्रेंडिंग हो, और 50% ऐसे कंटेंट जो एवरग्रीन हो। ट्रेंड से फायदा मुझे मिलेगा नए लोगों तक पहुंचने में और जल्दी से सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स गेन करने के लिए। बिकॉज ट्रेंड जो होता है कभी कभी हिट कर जाता है और एकदम से वो रॉकेट की तरह निकल पड़ता है। तो ये वाला आइडिया आज भी वर्क करेगा, और कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर है, बहुत तगड़ा फ्यूचर है। आप देखो कोविड के बाद से कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, फिर भी ढंग के कंटेंट बहुत कम लोग ही बना रहे हैं। राइट। तो अभी भी कंपटीशन इतना नहीं है, जो लोग अच्छा कंटेंट बनाएंगे उनके लिए तो मौका है ही है। Now that was some great insight from all the creators here. And with that note, I would like to end this panel session for now. अगर आपके कुछ questions है तो we will be available after this session as well, most probably. तो आप लोग quickly अपने questions पूछ सकते हैं after this session. So thank you so much guys for coming here. सेल्फी खींचनी है कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में। पीछे से। So guys, how was WordCamp Bhopal? Awesome. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much, everyone, for such a wonderful panel discussion. Can we have a big round of applause for everyone? So before we proceed with the closing remarks, it is crucial. It is a crucial moment to formally express our gratitude to all our speakers who have graced this event, sharing their wisdom and knowledge and contributing to the resounding success of WordCamp Bhopal 2023. I would like to invite all our incredible speakers to the stage. Firstly, Amit Singh, Prathamesh Balwe, and Imran Khan. Also, I would like to call upon the stage Atharv Kulkarni and Sumit Yadav to present the token of appreciation to our speakers.
Can we have a big round of applause, everyone? Can we have a big round of applause for Prathamesh Palve? Now I'd like to call upon the stage Now I'd like to call upon the stage Aditya Shah and Rashish Jain to present a token of appreciation to our speakers. Also, I would like to invite Vachan Kudmule, Pooja Deyashri and Naveen Jaiswal to the stage. A big round of applause to all the speakers. Sure, ma'am. Again. Yes. Can we have a big round of applause for Pooja Deyashri? I'd like to request Shivya Roy, Damini Tripathi, Satish Kushwaha, Dhairya Gangwani, and Arun Shinoy to please come up on the stage. I'd request Aditya Shah and Rashish Jain to be on the stage to felicitate our speakers. Can we have a big round of applause for all our speakers? These are just small token of our appreciation, a small gesture of gratitude for your valuable contributions to this event. Yeah. Thank you for joining us. So, as we approach the conclusion of this, okay, I'm so sorry. Shiva ma'am was left, and yeah. Can we have a big round of applause for Shiva Roy? So, as we approach WordCamp Bhopal 2023, it is my honor to invite the lead organizer to share their closing remarks. Please join me in welcoming Aditya Shah to the stage, who has tirelessly led this event and worked relentlessly to make it a resounding success along with his team. Your dedication has been truly inspiring, and we eagerly await your words, Aditya. Over to you. Good evening, everyone. I hope you had a wonderful day, full of, full of enthusiasm, right?
And I really thank you for joining in. I'm super glad that you all came down here from different part of India and even from abroad. I hope the mic is working. Sorry. Okay. So thank you so much again. Like, I would like to basically thank every one of you attendees, volunteers, organizers, speakers, and sponsors to come around and making this event a very good, successful event. Um, before we wrap this up, I want to highlight a few key points that we followed this year at WordCamp Bhopal 2023. So we started around 3 months back. So when I say we started 3 months back, we started to prepare for this event 3 months back, but it's been a few years. We have been thinking about doing a WordCamp in Bhopal again after doing the last one in 2017. And like when I say years, so I mean we have been thinking about what we should be doing in our next WordCamp, and we came up with a couple of things. For example, we thought of making this event full of arts. So we followed the local art, which is Gond art, and we made our logo out of it. So that's how we integrated art with WordPress and WordCamp. Next thing that we followed is the concept of sustainability. So if you guys know that Indian government has pledged to make this whole country sustainable, and like by the end of 2070, we tried to make our WordCamp sustainable by doing a couple of things. For example, we removed all of the plastic bottles from our event. So we tried. We could not really remove all of the plastic bottles, but we definitely tried, and you might have seen uh, glass bottles as well as the paper cups and not the plastic bottles. So that's how we tried making it sustainable. Secondly, we like as a token of gratitude, we have given some seed balls to all of our speakers and sponsors, so they can plant those and uh, make this planet more sustainable. Not just that we made this only possible for speakers and sponsors. We tried to include every one of you, and if you have seen your attendee kit, you should have received the seed pen in it. If you have not seen, you can just check it out. We have included a seed pen, so whenever you are done with that pen, you can plant that to make this mission more successful. So those are some key points that we followed this year, and to make this planet more sustainable. And that was our main theme. And we basically integrated both of the themes, like art as well as sustainability, as our main themes. So last but not least, like I would again like to thank every one of you to make this event successful. And like we would be meeting again uh, in the after party tonight. Who all are coming to the after party? Amazing. That's a huge number. By the way, like before I like conclude, I would also like to tell you one more fact about this WordCamp. So we expected an audience of 50 people in the contributor day, because that's the usual case when you have like 350 total number of attendees, you actually get like not more than 50 contributors on the contribution day, right? But we had a turnout of 135 contributors on the contribution day. A huge round of applause for all of us. So thank you, all of you, for joining in the contributor day. We had the great open verse walk. We had a great full day of conference. We had a lot of enthusiasm in each one of us. And I would like to thank whole of my team for making this event successful to the fullest. And I guess every one of us did their best to make it possible. So, all right, I would also like to call upon the stage all of our speakers to for a group photo. Can we have everyone here? All of the speakers, please.
Anyone left? Shivya, Naveen is here. Oh, she's there. Where's Naveen? Oh, he is. Do we have Naveen here? I guess he left. Oh, he's there. Cool. So I guess we have everyone. Please. Thank you. Thank you. Thank you so much, speakers. This event would not be possible without you guys. And this event would not have been possible without our awesome sponsors. Can we have you guys all as well on the stage, please? Do we have sponsors here? इसको बोल Can we have someone from each one of them, like Jetpack, GoDaddy, Bluehost, Vglot, SiteGround, UseTable, AccuWeb, MPSCDC, SEO Press, Elicus, Softaculous, Softface, UCards. I guess everyone is here. I guess we are missing because Savita is missing. Uh, वचन वचन आप भी स्पॉन्सर हैं like we are including micro sponsors as well. Can we all come here, please? ऐसे पतली गली से नहीं निकलना होता है सेंटर थोड़ा सा आगे पीछे ऑलरेडी थोड़ा सा मैं तो पढ़ना नहीं कर पा रहा इस साइड पीछे आ जाओ उधर पीछे आप आ जाओ अच्छा थैंक यू सो मच क्या कर रहे हैं अभी अभी वो वीडियो चल रहा है ये फ्रेंड ले रहा है वो आगे मुझे without before I call a whole of my team to the stage, we would like to show you guys something that we created from this event. Can we please play the video?
That was something that we created just now, like by our Sashank and Arpit. Thank you so much for the video. Last last but not least, the team who managed to create all of our plans and execute them by one, like from organizing our open verse walk to organizing the venue for the contributor day, to the before party, to the conference day, and to the after party that we'll be having tonight. Whole of the credits goes to the awesome team of organizers and the volunteers. Thank you so much. Can we also have every one of you come to the stage? Rishish, Pranjal, Asa, Pooja, Pihu, Kripesh, Ishita, Shashank, Sanskriti, Vansh, Priya, Yash, Rishika, Utkarsh, Atharv. आई गेस मैंने किसी का नाम मिस नहीं किया आस्था किया बोला मैंने मैं ना मेरा ठीक है मेरा चलता है श्योर कम वे शिवम 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 किधर यहाँ एक बंदा मिसिंग है जिसने लिटरली रात को 12 2 2 बजे तो उठ के काम किया है एंड whose name is Shivam, like we, oh my god, it's fine, like he should be super tired, so we'll be missing him. Let's take the photo here. Come. आ गया कम शिवम Thank you so much. Again, let's have a huge round of applause for every one of us to make this event the best one. Thank you so much. I think, hello? Yeah. So all the closing remarks have been made, but there is a quote that I read somewhere which again fits to the situation is that it's about the people that we have, how we're led, and how we go about it. So, many thanks to all of you for joining us, for trusting in this community, this local community, this local chapter, and for being part of this incredible success. Thank you. Before we go, let's take a selfie also, please. मेरा phone किधर है? I really wanted to do this from like 3 years now. उधर वाले इधर होगा? Can we all यार उधर वाले नहीं आ रहे हो आ जाओ इधर कम अब हो गया you missed that. Plus, can we have Chetan here, like and Vachan and Nidhi? So we are wrapping up this year's Bhopal's WordCamp, but we have lined up WordCamp Mumbai, WordCamp Udaipur, and WordCamp Ahmedabad.
So we have organizers from each of the WordCamps. Vachan from WordCamp Mumbai, Chetan from WordCamp Ahmedabad, and Nidhi from WordCamp Udaipur. Nidhi? Or there she is. So let's visit those WordCamp websites and apply to speak or volunteer or sponsor. And that's it. If you want to take. Hello everyone. Thank you for having us. WordCamp Bhopal was awesome experience. I was attending second time. So again in 9th of December we are organizing 4th of WordCamp Ahmedabad. So it will be around 800 attendees. Also we are soon announcing call for sponsors, speakers, also ticket announcement. So we are welcoming you all. So I am behalf of WordCamp Ahmedabad community. I am inviting you all to attend the WordCamp Ahmedabad as well. Thank you. Hello, all of you. I'm from WordCamp Udaipur organizing team, and WordCamp Udaipur is happening on 25th November. And I would love to see all of you there. And we are open for call for speakers and sponsor, and we will release the tickets soon. And it was first of all, I would like to thank WordCamp Bhopal team for organizing the epic WordCamp this time, because it was my first time I attended this WordCamp in Bhopal. So this is really amazing experience here. So thank you all of you. Hello everyone, my name is Vachan and I have another co-organizer Meher Balawi here from the WordPress Mumbai community. And so the WordPress Mumbai is happening at the end of this month, that's 28th and 29th October. And it is a 2-day conference. We don't have a contributor today, but it's a 2-day long conference that is going to be happening. The early bird tickets are still on because we've got splendid response from our sponsors. We were able to extend our early bird almost till the end of the event. So you're getting the early birds till the end of the event almost. So you can take your tickets for that because we are, as I said, it's end of the month itself. So that's, you need to start planning quick. Unfortunately, the call for volunteers has ended, but call for speakers and sponsors is still open. If anyone's interested, of course. And yeah, attended, definitely welcome to come. It's going to be the 8th edition of a WordCamp that's happening. So it's one of the longest running WordCamps in continuity from the any chapter program. So yeah, everyone's welcome. And thank you, Bhopal, for this opportunity. Thank you. Let's first. Sure. So before we wrap up, we have Shamli Surke ma'am, who wanted to share some words with us. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. I just wanted to thank the organizers for giving the speakers opportunity to speak. It was my first experience as a speaker, and it was very nice. I got the cooperation that I wanted. And I actually wanted to thank all the audience, because a speaker is incomplete without the listeners. So thank you for being such a good audience. And I'll urge all of you to have some takeaways from the sessions of your interest. May it be content, may it be optimization, security. That may be useful for you whenever you will be working in future. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Let's call it a day. And thank you all for joining. Let's meet at the after party. Thank you.